That we have some of the colonies which have got interest in the colonized countries. Africa is half Anglophone and other is Francophone. So the French colonies who is there. Yesterday's match was with Morocco and France. Morocco was colonized by French, to the French colony. So it was actually the colonizer versus the colony, who was fighting the match yesterday. And of not the least, it is a network of people who was affected. So what my message is that we can find our niche. We can see what is good, what is possible for us, and then build upon that. I think that was something which I could also find success in my in my career. Take challenges, find out your niche, improve your competencies, skills, dream big, and be ready to struggle. I think then you are there. That's my message to you all. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sherry, for your global perspective on social work. May I now invite Mr. Subhash Ji Mindapurkar sir. Please. I am visiting this institute exactly after 50 years. My first visit आपकी संस्था में मैं दिसंबर 1972 में आया था, when Dr. Kolte was heading this institute. And now it is 50th December again 2022, so exactly 50 years. Thanks Pathare for giving me this second opportunity to visit your institute. 1972 में जब मैं यहाँ आया था तो अकाल पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरह से, 68 to 73 तक का अकाल था. उस अकाल के वक्त ऐसा इस संस्था ने क्या किया था कि यहाँ के कुछ लड़कों को उन्होंने सुपरवाइजर के रूप में फैमिली रिलीफ कैंप में लगा दिया था. And that was a unique experiment Dr. Kolte done, who was a great visionary teacher. And I was taken to meet some of them, and then again went to the places where there was no supervisor from this institute, and could see the difference between the two. So I have a great appreciation for this institute since 1972. Thank you very much. Now coming back to what? Practice social work. When I was leaving TISS in 1977, हमारे यहाँ एग्जिट इंटरव्यू होते थे. जाने के पहले हर एक स्टूडेंट को एकेडमिक काउंसिल बुलाकर पूछ लेता था कि क्या सीखा आपने, क्या सुधार होना चाहिए. मुझे पूछा गया तो मैंने कहा कि एज ए सोशल वर्कर क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने 2 साल में सीखा. And I swear I learned that at the cost of 2 years my rigorous stay at TISS. So what am I not supposed to do? और that's a great learning. अगर आपको फील्ड में काम करना है तो आपको सबसे पहले अपना इंटेलेक्चुअल एरोगेंस गवा देना होगा. I get so many interns repeatedly, and my first 3 days with them, how to remove their intellectual arrogance. मेरा इंटेलेक्चुअल एरोगेंस जो है गांव की महिलाओं ने जमींदोस्त कर दी. मैं भी अपने आप को बड़ा होशियार समझता था.
लोगों बड़े PISS से आया हूँ, उसके पहले 2 साल कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ, उसके पहले जर्नलिस्ट रहा हूँ, उसके पहले एक्टिविस्ट रहा हूँ। तो चलो मैं तो होशियार हूँ, गाँव की लोग महिलाएं अनपढ़ है। तो एक सहारनपुर का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। सहारनपुर उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर है, हिमाचल के बॉर्डर पर है। मेरा एक दोस्त वहाँ पर बब्बर घास काटने वाली महिलाओं के साथ काम करता था। उसने कहा कि यार तू स्वास्थ्य पे बहुत बात करता है, आज हमारी महिलाओं के साथ बात कर। तो गया मैं। पहले पूरा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, प्रोक्रिएशन को कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर बढ़िया सा भाषण मैंने दिया, स्लाइड्स वगैरह दिखाते। उन दिनों स्लाइड प्रोजेक्टर हुआ करते थे। आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है। फिर मैंने पूछा, वो बड़ा गुस्सा आया, मैं तो बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। मैंने कहा कि जाओ खाना खाओ तुम, तुम्हें कोई समझ नहीं है। मैं आके कोने में बैठकर अपना खाना खाने लगा। एक बुढ़िया मेरे पास आ गई, बोली बेटा बहुत गुस्से में हो क्या? मैंने कहा नहीं तो क्या, मुझे 3 बार समझाकर वही जवाब आता है, ऊपर वाले की मर्जी। उस महिला ने मुझे पूछा बेटा तुम्हारी शादी हुई है? मैंने कहा हाँ हुई है। तो कौन होता है ऊपर वाला महिला के लिए? जिसको समझ में आ गया वो फील्ड वर्क में सक्सेसफुल होगा, जिसको समझ में नहीं आ गया वो यहीं बैठा रहेगा। महिलाओं के साथ काम करना है तो महिलाओं की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। यह अर्बन फेमिनिस्ट नहीं, गांव की महिलाएं जो भी सोचती है वो कलेक्टिव वेलबींग के लिए सोचती है। क्या ये हमारे सबके लिए भला होगा क्या? और एक कलेक्टिव वेलबींग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एंटी लिकर मूवमेंट में 105 महिलाएं 3 दिन पदयात्रा करके, आजकल जिसका नाम आ रहा है उसका बाप उन दिनों चीफ मिनिस्टर था, तो उसको पकड़ के गए, तो महिलाओं को अरेस्ट करके वापस आए। जर्नलिस्ट हमारे चंडीगढ़ से आए, उन्होंने इन महिलाओं को पूछना शुरू किया कि आपको कैसे मारता है आपका पति दारू पी के, आपको कैसे पीटता है आपका पति आपको दारू पी के। सबने कहा कि हमको किसी ने नहीं पीटा, हमारा पति तो पीता ही नहीं है, तो फिर तुम गए क्यों? तो महिलाओं ने कहा कि हम उनके लिए गए जो मार खाते हैं, उनकी आवाज वहां पहुंचाने के लिए गए। क्यों नहीं वो महिलाएं गई? क्योंकि वो मार खाकर इतनी डरी हुई रहती है कि वो जा नहीं सकती, इसलिए हम चले गए। एंड दैट इज एन इम्पोर्टेंट कलेक्टिव वेलबींग। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो चुके हैं और हमारा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मोबाइल रह गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत आज़ादी का किसी ने सुबह बताया कि 75 साल की डेमोक्रेसी वगैरह हुई है। सिविल सोसाइटी के लिए सबसे गोल्डन पीरियड रहा है 1980 से लेकर 1995 तक, फ्रांसिस जेफरसन एग्रीकर ले। उस दौरान हुए हर एक प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी जी से लेकर देवेगौड़ा तक, हर एक प्राइम मिनिस्टर ने सिविल सोसाइटी के साथ पार्लियामेंट एनेक्स में बातचीत करी हुई। पार्लियामेंट एनेक्स ध्यान में लास्ट पार्लियामेंट एनेक्स में हमारे साथ बातचीत करने वाले प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद कोई नहीं आया हमको पूछने के लिए।
क्योंकि सिविल सोसाइटी का ये गोल्डन पीरियड समाप्त हो चुका, थोड़ा सा बीच में और आ गया। लेकिन इस दौरान 1980 से 1995 के बीच में हिमाचल के महिलाओं ने क्या करके दिखाया जो आज भी लागू होता है। 1989 में उन्होंने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो निकाला, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मैनिफेस्टो, वुमेन्स मैनिफेस्टो। और उन्होंने तय किया कि एंटी लिकर मूवमेंट का मजाक उड़ाने वाले और असेंबली में बार बार सवाल उठाकर मुझे गुनाहगार ठहराने वाले, मतलब संस्था को गुनाहगार ठहराने वाले उन 7 एमएलए को हरा कर दिखाएंगे। और हराया। 68 संख्या में 7 सरकार बदल जाती है। महिलाओं ने कहा कि कौन जीतेगा हमको पता नहीं, लेकिन इन्होंने हमारा मजाक किया, हम इनको हरा के दिखाए। उस इलेक्शन के बाद से लेकर 2022 के इलेक्शन तक कोई भी कैंडिडेट हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा होता है तो सबसे पहले वो सूत्रा में आता है और हमसे पूछते हैं। और उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने संस्था के साथ कोई इंक्वायरी का तमाशा खड़ा नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि कैसे पॉलिटिकल स्टैंड आपको लेना पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो गए तो आप अपॉलिटिकल रह जाओगे। अपॉलिटिकल कोई नहीं होता। अपॉलिटिकल का मतलब होता है मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। अच्छा, तो ये 2004 में सरकार का और सिविल सोसाइटी का हनीमून पीरियड खत्म हो गया और 2014 के बाद तो सारा ही अलग हो गया है। अब तुम्हारी जरूरत इसलिए है क्योंकि आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो हो वो आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को सक्रिय और सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार हो। अगर नहीं है, लोगों के सवाल उठाने हैं, लोगों के खिलाफ अन्याय अत्याचार लोगों के ऊपर जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, तो अपना ये प्रोफेशनल सोशल वर्कर का इंटेलेक्चुअल एरोगेंस को निकाल और लोगों से सीखना शुरू करो। जब आप लोगों से सीखना शुरू करते हो तब आपकी सचमुच में ग्रोथ होती है, जो मेरी हुई है। और मैं अपने जिंदगी से यही बता सकता हूँ कि सैकड़ों महिलाओं ने मुझे सिखाया, सैकड़ों महिलाओं ने मुझे सिखाया। एक एक किस्सा अगर मैं बताने जाऊँ तो कई घंटे लगेंगे, लेकिन हर एक कैंप, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कैंप हो, बाहर गांव का कैंप हो, उस कैंप में एक न एक महिला ऐसी जरूर निकलती थी जो मुझे कुछ ना कुछ सिखाती जाती। जब तक हम सीखने को तैयार नहीं है गांव में, उनसे फैकल्टी से आपका एप्टीट्यूड बढ़ सकता है, एटीट्यूड नहीं। सोशल वर्क हो या किसी भी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो है वो आपका एप्टीट्यूड बढ़ाती है, एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड आपका बनता है जब आप लोगों से सीखना शुरू करते हैं। आखिर में एक बात कहकर मैं आपका खत्म करूंगा। हमारे जमाने में हिंदुस्तान में सिर्फ 2 कार हुआ करती थी, एक फिएट और एक एम्बेसडर। एम्बेसडर कार का क्या था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब लोग वही इस्तेमाल करते। एक इक्वेलिटी थी, लेकिन एम्बेसडर कार का एक खास था, वो था एम्बेसडर कार में देयर वाज ऑलवेज अ स्पेस फॉर वन मोर। आज दर्जनों गाड़ियां निकली हुई है, देयर इज नो स्पेस फॉर वन मोर। You as a social worker
will you try to create that space for one year? अगर आप ये करोगे तो सोशल वर्क इंस्टीट्यूट का और डॉक्टर कोलते हिवाड़े इन्होंने जो मेहनत करी है वो सफल होगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी वेल सेड। बहुत सही बोला, एटीट्यूड एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल एरोगेंस एंड sir focused on learning, which even in the inaugural session Prasanna sir also talked about that I have come to learn. Thank you sir for those kind words. May I now request Dr. Sanjay ji to kindly share your views. Thank you. थैंक यू सर। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और नीचे बैठे सबको मेरा नमस्कार। मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि मुझे इस लेवल की कभी शिक्षा ही नहीं मिली कि मैं इंग्लिश में बात कर सकूँ। ठीक है। मेरी जो बातें हैं वो एक्चुअली मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कुछ लोगों अभी आए उसके लिए। मेरा नाम डॉक्टर संजय जांगड़े है, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने नाम सुना होगा, बस्तर एक जगह है सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जगह, वहाँ पे भी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बताऊंगा अपने बारे में कि हमने क्या और कैसे किया। छत्तीसगढ़ में MSW एक्चुअल में पढ़ने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कोई MSW पढ़ता नहीं, वहाँ सब समाजशास्त्र पढ़ते हैं। उसका रीज़न ये है 1995 से छत्तीसगढ़ में MSW चल रहा है, लेकिन आज तक एक भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति ही नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में। तो फिर इतने सालों से वहाँ पढ़ा कौन रहा है MSW? तो वहाँ MSW पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी वाले लोग, हमको भी उन्होंने ही पढ़ाया। तो जब हम जाते थे फील्ड वर्क में या कहीं भी या फिर कुछ भी, तो समस्या ये कि जब हम बताते थे कि क्या पढ़ रहे हो MSW, तो अच्छा समाज शास्त्र कर रहे हो, ऐसा बोलते थे। लड़की देखने गए मैं अपनी शादी के लिए, तो बोला मैं क्या किए हो, मैं बोला MSW की। हम बोलते अच्छा समाज शास्त्र की है। अंतर ही नहीं है पता वहाँ पे। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। फिर शादी हो गई, वाइफ बोली पढ़े तो अच्छे हो MSW, लेकिन जॉब क्या मिल रहा है? बोला NGO में जॉब मिलता है ना अच्छा खासा। NGO में छत्तीसगढ़ में सैलरी 3,000 से चालू होती है, 10,000 में ख़त्म होती है। छत्तीसगढ़ की हालात ये है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट DPM का प्रोजेक्ट होता है, BPM का पोस्ट होता है, काउंसलर का पोस्ट होता है, बहुत सारा पोस्ट है, उसमें MSW वालों को नॉट एलिजिबल घोषित किया जाता है। हमारे यहाँ है ये, हम फॉर्म भरते थे, फॉर्म भरने के बाद लाइन में खड़े होते थे, लिस्ट में नॉट एलिजिबल हो जाते थे। तो करे क्या, 3,000 का जॉब करे, 5,000 का करे, 10 का करे, अब घर कैसे चले? प्लस सोशियोलॉजी का टैग, मैं सोशियोलॉजी का बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे बोला जाता था। तो फिर ना बात एक दिन बहुत ख़राब लगी, तो फिर ये सोचा कि अब ऐसे में क्या किया जाए। MSW कर तो लिए, कौन सा जॉब किया जाए? पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन नौकरी भी तो मिलना चाहिए। इतनी महंगी फीस किए थे। एक्चुअली मेरे मदर फादर के डेथ होने के बाद मैंने खुद की अपनी पढ़ाई जो है ड्राइवरी करके किया था। एक स्कूल में वैन चलाता था, वहाँ से जो पैसे मिलते थे MSW की फीस भरते थे। अब वो इतनी मेहनत से MSW पढ़ाई किए, लेकिन मिल क्या रहा है जॉब में? 3,000 का जॉब। NGO वाले बोलते थे फ्रेश ही हो, एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस के बाद ज़्यादा सैलरी दे देंगे। ऐसे तैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5,000 10,000 हाईएस्ट सैलरी होती थी। कहाँ घर चले? तो फिर एक दिन सोचे कि नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं। तो हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी पहले एक लिस्ट बनाई, कहाँ MSW की पढ़ाई होती है, फिर कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है, उनकी लिस्ट निकाली, संख्या निकली 0। क्यों? एकमात्र गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, वहाँ पे कहीं भी परमानेंट फैकल्टी नहीं। पढ़ा रहे सारे सोशियोलॉजी वाले। मुझे पढ़ाया एक व्यक्ति ने जिसने कंप्यूटर साइंस से MCA किया हुआ है, वो एडहॉक का टीचर था, वो पढ़ाने आता था MSW को। इतनी हालात खराब थी। तो फिर हमने क्या किया, सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ सबके बच्चों को 1 by 1 जाकर एक क्लासमेट को पकड़ते थे, बोलते थे कि हम एक यूनिटी बनाने वाले हैं सोशल वर्क के हित के लिए।
अगर आप समाज कार्य करना चाहते हो तो पहले तो अपने लिए कर लो। MSW पढ़ तो लिए हैं भाई, MSW का पहला नियम यही है ना कि सामने वालों को उस लायक बना दो कि अपनी समस्या का समाधान खुद कर ले। लेकिन हम तो अपनी समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रहे हैं। 3,000 रुपये सैलरी है, NGO में गवर्नमेंट जॉब देती नहीं है, नॉट एलिजिबल घोषित कर देती, तो करे क्या? तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किए, बताए कि अगर ऐसे ही चलता रहा बाबू तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हमने 1100 स्टूडेंट्स, MSW वालों को 1100 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद एक जगह मीटिंग हो नहीं सकती थी, तो अच्छी समझ में आया कि सबके हाथ में फ़ोन है एंड्रॉयड, तो क्यों ना इसका यूटिलाइज किया जाए। तो हम लोग हर वीक में एक वेबिनार आयोजन करते थे खुद का, कि कैसे MSW वालों का भविष्य अच्छा हो सकता है। वेबिनार के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ते गए, कुछ लोग पीछे छूटते गए, कुछ लोग जोड़ते गए। लोगों को बहुत जल्दी भरोसा कहाँ होता है किसी चीज़ के लिए, पढ़ लिया MSW लेकिन नहीं, अपने ऊपर कहाँ इम्प्लीमेंट करते, नहीं करते। क्योंकि MSW हमने ऐसे जॉब के लिए पढ़ा था, बाद में समझ में आया कि उसके तो बहुत सारे फायदे हैं। तो जब 1100 लोगों को इकट्ठा किए कि अगर हम एकत्रित हो गए तो शायद जितने भी प्रोफेशनल सोशल वर्क प्रैक्टिशनर हैं उनका लाइफ अच्छा हो सकता है। तो जब 1100 लोगों को इकट्ठा किए तो बोले, कलेक्टर के पास जाते थे तो कलेक्टर हमको धक्के मार के बाहर निकाल देता था। राजपत्र के गजट में ही वैसा प्रकाशित नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। सोशियोलॉजी वालों का जॉब है, उन्हीं को मिलेगा, MBA वालों को मिलेगा या सोशियोलॉजी को। सोशल वर्क है क्या चीज़, हटा देते थे, भगा देते थे। फिर क्या किए, हमने एक आइडिया निकाला, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आता है। हमने कहा भाई हम लोग 1100 लोग हैं और 90 विधायक हैं, तो क्यों ना 90 विधायक के पास अगर हर महीने 1100 पोस्ट कार्ड जा गया तो कुछ तो पत्ता हिलेगा। तो हमने भेजना चालू किया पोस्ट कार्ड 50-50 पैसे का। तो 1100 पोस्ट कार्ड हर विधायक के पास जाता था, 90 विधायक के पास। परेशान हो गए वो, कौन है यार ये पत्र बम फोड़ रहे हैं घर में। देखिए यहाँ से होता है परिवर्तन, जब आप एकत्रित होते हो। तो जब 1100 6 महीने तक हमने लगातार भेजा उनके पास पोस्ट कार्ड कि सर हम भी इंसान हैं, हमें भी तो दर्जा दीजिए, या तो MSW बंद कर दीजिए पढ़ाई छत्तीसगढ़ में, अगर पढ़ा रहे हैं तो उन टीचरों से पढ़ाइए जो योग्य है। 2 ही कंडीशन थी हमारी, या तो टीचर की नियुक्ति कीजिए जो सोशल वर्क को सोशल वर्क की तरह पढ़ाए, या फिर सोशल वर्क की पढ़ाई बंद कर दीजिए। पढ़ाई करवा रहे हैं तो हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज दीजिए, वो भी नहीं था, 0 था। तो हमने क्या किया, 1100 पूरा हर एक के पास भेजना चालू किया। सब परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, कौन है। फिर इसके बाद हमने चालू किया RTI लगाना। शिक्षा विभाग में कितने MSW वाले काम कर रहे हैं, सिंचाई विभाग में कितने MSW वाले काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर में कितने MSW वाले काम कर रहे हैं। आंसर आता है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर हम कोर्ट में चैलेंज किए, पढ़ा क्यों रहे हो फिर जब नौकरी नहीं देना है। तो इस प्रकार ये हुआ। PSC में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती थी तो समाज शास्त्र का पोस्ट आता था, समाज कार्य का नहीं आता था। 25 साल बीत चुके थे, सरकार को पता ही नहीं था, ध्यान किसी को लेना देना नहीं। तो हमने उनको जगाया कि भाई हम भी इंसान हैं, हमको भी पढ़ाई करना है। तो इस साल 3 साल हो गए, छत्तीसगढ़ सरकार हमारे सामने झुकी और अंततः उन्होंने मान लिया कि समाज कार्य नाम का कोई विषय है। और PSC का जब 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट आया तो उसमें लिखा था समाज कार्य विषय के अभ्यर्थी समाज शास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं। हमने कहा फिर वही बात, हम पढ़े हैं MSW और कैसे सोशियोलॉजी का PSC का मैं पेपर निकाल सकता हूँ। आप मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट के लिए एलिजिबल तो कर रहे हो, बट मुझे फिर से सोशल वर्क पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। नेट में भी अब नेट सेंट्रल गवर्नमेंट हमको अलग मानती है, इसीलिए तो हमको नेट का एग्जाम देने को अलग से मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट मानती ही नहीं है, बोलती है एक साथ दो सोशल वर्क सोशियोलॉजी। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन थे। तो हमने क्या किया, 90 विधायकों को परेशान करने के बाद हमने टारगेट किया 13 मंत्री हैं वहाँ। तो बोले अब 13 मंत्री को टारगेट करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ अगर परिवर्तन विधानसभा से ही होना है
तो विधानसभा को जो लीड करते हैं क्यों ना उनको परेशान किया जाए। तो उन 13 मंत्रियों के घर अब लेटर भेजना चालू किए, प्लस 11 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, उनको लेटर भेजना चालू किए। इस बार स्पीड पोस्ट भेजना चालू किए जितना, फिर 13 मंत्रियों के पास जब 1100 लेटर पहुंचा तो परेशान हो गए। अब अभी ये हालात हैं कि वहाँ का लोकल विधायक अगर कुछ करता है, वहाँ का पंच सरपंच या फिर MP MLA कुछ गलत काम करता है तो उसके मन में डर रहता है कि अगर मैं इधर उधर कुछ करूँ तो ना MSW वाले आके दिमाग खराब करें, तो वो डरने लगे हैं थोड़ा सा। और दूसरी इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब हमको अलग दर्जा दे दिया गया, लेकिन हमने फिर कहा कि हमको व्यावसायिक का दर्जा दो, प्रोफेशनल का दर्जा दो। तो मामला अभी भी अटका हुआ है, प्रोफेशनल का दर्जा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। हमने लिखा था व्यावसायिक समाज कार्य संघ छत्तीसगढ़, वो कहते हैं कि आप समाज कार्य संघ छत्तीसगढ़ लिखो, व्यावसायिक शब्द हटा दो। मैंने कहा मैंने तो पढ़ाई व्यावसायिक के रूप में किया है, प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर के रूप में हमको पढ़ाया गया MSW, आप कैसे करवा सकते हो? तो अभी मामला ये अटका हुआ है। तो जब 1300 मंत्रियों को हमने परेशान किया तो अभी ये हो गया कि मंत्री के बंगले के बाहर जब MSW का बैनर लगता है तो मंत्री जी पीछे से भागते हैं, सामने से नहीं आते क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। तो हमने, हमारा जो सबसे बड़ा चीज़ था अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए था छत्तीसगढ़ में, MSW का कोई अस्तित्व नहीं था वहाँ। तो पहला लड़ाई था अस्तित्व के लिए। दूसरा समस्या थी हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, लड़े तो लड़े कैसे, एकजुट करें तो कैसे। तो हमने मोबाइल का यूज़ किया, और अच्छी बात ये थी कि उस समय जियो सस्ता था, तो हमने उसका यूटिलाइज किया रिसोर्सेस के रूप में। सबको जॉब चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो लोगों को कन्विंस करना भी मुश्किल था कि आप आइए हमसे जुड़िए, ये आप ही के लिए है। उनको लगता था कोई मैं पॉलिटिकल लीडर बनूंगा या कुछ और, ये भी एक समस्या आई। तीसरी समस्या आई कि जिनके अगेंस्ट जो हम लोग लड़ रहे थे, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, लोकल MLAs के अगेंस्ट, और जो हमारे जॉब को लेकर बैठते थे, मान लीजिए MSW को के जॉब पर MBA वालों की नियुक्ति होती थी और समाजशास्त्रियों की, तो उन लोग भी हमारे अगेंस्ट आ गए। तो कितने सारे लोगों को लड़े, तो बहुत सारे ग्रुप बीच में धमकाने लगे, छिन्न भिन्न होने लग गया। स्थिति ये थी। धीरे धीरे चीज़ें आई। फिर एक टाइम के बाद सर से मिला मैं, प्रोफेसर संजय भट्ट सर से, इन्होंने मार्गदर्शन किया। फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए छत्तीसगढ़ में वेबिनार के रूप में। उस वेबिनार में हम जो जितने भी सोशल वर्कर था छत्तीसगढ़ का, एक प्रकार से हम लोगों को ट्रिगर कर दिया था वो। तो जब NAPSI के द्वारा इनिशिएट किया गया और हमको समझ में आया कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमसे पहले बहुत पहले के नेशनल लेवल पे लोग लड़ रहे हैं, तो क्यों ना उनके साथ जुड़ जाए। तो सर के जुड़ने के बाद हमारी जो मूवमेंट था उसको काफ़ी ट्रिगर मिला, बूस्ट हुए, और आज हमको एक विषय के रूप में जाने जाने लगा। और अच्छी बात यह है कि जो सैलरी 8,000 10,000 थी, मतलब हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया था, NGOs को भी हम सब, जितने भी NGOs थी, हमने सब NGOs की लिस्ट निकाली। रायपुर जिले में कितने NGOs है, बिलासपुर में कितने, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कितने NGOs, सारे 33 जिलों के NGOs को हमने लेटर में लिखा कि अगर आप 10,000 से नीचे सैलरी देते हैं तो आपके यहाँ कोई भी काम नहीं करेगा, ना हम काम करने देंगे किसी को। तो आज सैलरी भी ये सम्मानजनक हो गई है थोड़ी सी, 10,000 कोई सम्मानजनक नहीं है, लेकिन उससे ऊपर मिलना चाहिए। पहले तो 3,000 4,000 में मैं खुद काम किया था। सर 2 मिनट और जी। तो बेनिफिट ये हुआ कि सारे NGOs अब जो एक्सप्लॉइटेशन होता था MSW वालों का, उससे डरते हैं वहाँ पे कि अरे यार समाज कार्य संघ वाले आ जाएंगे, फिर हमारे सिर में चढ़ जाएंगे। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि थोड़ी सरकार अब हमको समझने लगी, और जो DPA BPA काउंसलर के पोस्ट पे जो हमको नॉट एलिजिबल घोषित किया जाता था, वो अब घोषित हो गया है, हम अब एलिजिबल हैं, अब फॉर्म भरते हैं। अब इसके बाद ये हुआ कि अरे यार बहुत सारे हमारे अचीवमेंट तो फुलफिल होते जा रहे हैं, अब क्या करें। तो अभी हमने जो 1100 लोगों का जो हमारा ग्रुप है, जिनको हमने एकत्रित किया, हम सब ने मिलकर एक डिसाइड किया कि एक नया काम चालू करेंगे शिक्षा को लेकर। तो जो रूरल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं और नक्सल प्रभावित बच्चे हैं, हम वहाँ के बच्चों को अभी हर जिले के 200 बच्चों को हम गोद ले रहे हैं।
अभी हमने कोरबा जिले के 200 बच्चों को गोद लिया है और बस्तर जिले के 200 बच्चों को गोद लिया है, दंतेवाड़ा जिले के 200 बच्चों को गोद लिया है। 3 साल में हमने 600 बच्चों को गोद लिया हुआ है। उनको फ्री में CGPSC, व्यापम, UPSC जितने भी सिविल सर्विसेज होंगी उनकी तैयारी हम कराते हैं, जो भी खर्चा होता है हम देते हैं और ये सब हम अपने से करते हैं। इसमें जिला प्रशासन अब सहयोग करती है। पहले जो जिला कलेक्टर हमको धक्के मार के निकाल देता था, आज वो कहती ठीक है, हॉल हम देंगे, बिजली हम देंगे, कुर्सी हम देंगे, पानी हम देंगे, आप आइए और पढ़ाइए। तो अभी हमने ये काम चालू किया हुआ है और जिन बच्चों को हमने गोद लिया सबके सब social action. For what purpose we teach students social welfare administration? Somewhere we have to focus. Madam Joseph Heller taught the community development program. He asked his planner yesterday, he was the national planner, go to the Paunara. After Gandhi, he is the representative of the Gandhi. Ask him for the blessing to the nation. कि बताइए जाकर के उससे कि हम 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के सपनों का भारत क्रियान्वित करने के लिए हम पंचवर्षीय योजना ला रहे, सामुदायिक विकास योजना है। इसके लिए साथ गए, आदेश था नेहरू का पंडित जी का, और गए गुरुवार जी से मिले कि पंडित जी ने भेजा है आपका एक जनता के नाम संदेश आकाशवाणी से रिलीज हो जाए और शुभकामना संदेश जनता को दे दीजिए। अब हम वो करने जा रहे हैं। बताया कि कैसे उन्होंने तमाम सारे प्रोफेसर की प्रोफेशनल जर्नी का उल्लेख किया, कहाँ थे, कहाँ से पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीस की बात, अभी हमारे आदरणीय आए थे नागालैंड से, बहुत अच्छी बात बताया। दुनिया को पीस, जब हिंदुस्तान में दुनिया में पीस सेंटर गालकुन साहब बोला था, हिंदुस्तान के वेदों में पीस का शब्द का उल्लेख हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद में वेदर्षि करते हैं पृथ्वी शांति, औषधे शांति, वनस्पति शांति, शांति रोधो शांति। हमारे यहाँ हर पूजा के बाद पाठ होता है। हमने तो दुनिया को शांति का संदेश दिया है, हम इस वैल्यूज को भूल गए। एक बात, और यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आपने काम किया इस पर। हिंदुस्तान के पहले फिलॉसफी के आचार्य, पहले भारत रत्न भगवान दास जी ने पहली किताब लिखी, साइंस ऑफ पीस। जब दुनिया में कोई किताब पीस पर नहीं थी, तब साइंस ऑफ पीस लिखा है। हमारे पास लोगों का आदेश आपकी पाऊँ मैं, इस धनवा की है क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। भगवान राम ने भी गुरु का नाम दिया, गुरु की जो परंपरा है शिष्य की राष्ट्रीय में भी है। बच्चे मिलते बड़े प्यार से मिलते हैं। भगवान राम रावण को मार के अयोध्या आए, उत्सव हो रहा है, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या अच्छा बाण मारा, हरा दिया। लेकिन कहते हैं क्या, जान के वो चापलूसी कर रहे हैं, मंत्री बनने के लिए कर रहे होंगे, कुछ पद पाने के लिए कर रहे होंगे, वाइस चांसलर बनने के लिए कर रहे होंगे। हमने किसी को नहीं मारा, मेरे ताकत नहीं है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कितना धनुष रन मारे। मेरे ताकत नहीं, मेरे गुरु की ताकत है। और वो खोल दिया कि गुरु ने बताया तो बात तीखा लगा। मैं अपने ऐसे भट्ट साहब को, जो अच्छी बार मारने की कला सिखाए हैं सोशल वर्क के प्रोफेसर्स को, और रिजल्ट लेकर के आते हैं, मैं उनको और उनके शिष्य जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं उनके साथ बात पूरे आज यहाँ पधारे में जितने भी नापसी के मैं बहुत देख रहा हूँ। बड़ा ताकत तभी आती है प्रेसिडेंट को जब अपने पीछे सेना देखता है। अपने पीछे प्रोफेसर संजय राय जानते हैं युद्ध में संजय की भूमिका क्या थी। आपके पास दो दृष्टि हमारे पास, उनके पास खुला था बैठे हुए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मामे का संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या हो रहा है, संजय बताओ। तो ये राष्ट्र में क्या चल रहा है, संजय बताओ। मोदी हमारे पास है और अमित शाह की तरह का सब ब्रेक, टी ब्रेक है। We need to essentially understand what climate change, this story is all about.
You see, it is like this. Our earth is there, which is enveloped by a blanket of air, we call as atmosphere. And we have the source of our warmth, which is ultimately the basis of life, in the form of a sun, about which some of the slides will certainly speak about. Now here what happens is, the quantum of this heat and light that we get from sun is enormous. It has to be in a certain specific range. And the structure of atmosphere and the function of it is such that we get a certain quantum of heat and light onto the earth, of which 2/3 is absorbed, 1/3 is reflected back. And of what is reflected back, a certain amount of it is retained. Now this certain amount of heat retained depends upon the layer of carbon dioxide, which happens to be 0.003%. This is a minuscule amount of gas in the form of a very thin layer, but perhaps it acts like a seal. And therefore, now what happens is, should the quantum of CO2 increase, which it is by virtue of the greenhouse gases that we are producing at a very faster rate, now the amount of heat which is reflected back from the surface of Earth and could have escaped into the space, outer space, now it is retained. As a result of which, what happens is, excess amount of heat is redistributed all over the world. And this essentially heats up the earth. This is global warming in simplest possible form. And that's what is shown in the picture. This picture again is just to clarify, remove any kind of misconception should we have or lack of understanding about the atmosphere. Here, the crust and above layers, troposphere, stratosphere, ionosphere and exosphere essentially speak about this. In troposphere, we happen to have the layer of carbon dioxide. Next slide please. And this is again a pictorial depiction of what I said. The heat that is reflected back into the atmosphere, it is essentially a small amount of which is not permitted to escape, but it is retained by virtue of CO2 and the other greenhouse gases, because of which our earth is heating up. And please keep it in mind, what is the secret of life on earth? There are many things that are talked about. And of course, there are 1001 factors that are essential for life. But then please keep it in mind, it is the warmth. It is the same warmth the baby gets in the womb of a mother. It is the same warmth the hen provides to the egg. And the constant temperature that we maintain in our body, because we are homeotherms, it is this warmth that makes our body work. Next slide please. Now here, as a matter of chance, when we talk of global warming or a climate change, as time often it so happens, we confuse between weather and climate. Climate is all about the weather conditions over a very long span of time, right? And that's what we need to be. With respect to when we talk of sun, sun emits solar radiations. These are electromagnetic radiations. 2 billion units are essentially thrown towards the earth, of which only 2 units reach the earth. And of this, almost 51% is accepted by us, rest is absorbed by the atmosphere. So it is a small quantity, but it is good enough. Now imagine these 2 units of the solar energy in the form of heat and light that comes to the earth. If it can be retained by us or it can be conserved, it will be good enough for all energy requirements for 1 year. And this we get in 1 day. So imagine, understand the huge quantity of this energy that we happen to get. And of course we know for sure, sun is the eternal source of energy and therefore life on earth. So, as said, 50% of this radiant energy reaches the earth, right, is reflected back, and there is an issue about what escapes back into the atmosphere and what is retained by the earth. We come to the next part of it. Next slide please. And that is the greenhouse gases. Now here it is a pictorial come
labeled diagram that essentially gives us the idea of the Earth and the atmosphere, the solar radiations, and what is reflected back. Next slide, please. Now, this has a huge effect on what we called as weather pattern. Now, weather, it's for a location for a short while, but then it has a great effect on many things that determine life. For example, the crops that grow, they depend a lot on one of the very important factor, and that is the weather of the region. And should there be anything that disturbs it, it is going to be catastrophic. It is believed, though not scientifically proven as yet, is that paddy and corn would not grow well. And these are the two crops that happens to be the staple food for the whole of the world. And therefore, change in weather pattern could be very, very catastrophic for the whole of the mankind. Now here, when we say global warming, often when you look into the academic aspects of it, we talk in terms of greenhouse effect, because I use the word greenhouse gases, and therefore it needs to be cleared. What is this greenhouse as such? Now, you know, in a colder countries, particularly temperate countries, people often construct a glass house, often with green colors of a glass that essentially permits the solar radiations inside, but does not permit the heat to escape out. And this provides a certain degree of warmth to the plants, and they are better conserved in spite of having very, very cold and harmful weather for the plants as such in general. Now, exactly same is the situation with the Earth. Now, what has happened is we have added the greenhouse gases in the form of methane, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur oxide, nitrogen oxides, and so on and so forth, and cooling gases in addition to it, which are acting like a green glass house, which retains the warmth. And that's what is happening with the Earth. The Earth is retaining more quantum of heat than it is supposed to be. And this is heating up the whole of the world. Now, when this happens, ultimately it has effect on the climate globally, and which will affect many aspects of our life, both plants and animals put together. So, in general, what happens is, because of the accumulation of greenhouse gases, now as such, our globe, our Earth is getting heated up, and that's what the picture shows. Next slide, please. Now, the main culprit behind climate change is the greenhouse gases, which essentially comes from burning of fossil fuel. Now, it is really a tragedy on part of mankind that we have technically progressed so much that we can send a probe to Mars and control the rover from here. The rover, the vehicle that can move on the Mars from here. Yet we could not devise technology that can essentially harvest the solar energy. This is really tragic on our part. But then, having said this, our over-dependence on the fossil fuel, be it coal or petroleum or such other products, we are adding a huge quantity of these gases into our atmosphere. And since last 300 years, it has increased in such a gigantic proportion that we are feeling the ill effects of it. Next slide, please. So, with greenhouse gases, gradually the Earth is warming up. This warming up is almost near half a degree centigrade in the last 300 years. And the catastrophic effects have just set in. From here onwards, even a minuscule amount of addition of temperature is going to be very, very harmful for us. Next slide, please. Well, we have gone through Corona, the epidemics, the pandemics. Now here, should there be change in weather, it is going to be favorable to some of the microbes also. Life on Earth in the form of life on Earth in the form of plants, animals, microorganisms.
some of the microorganisms, which often happens to be useful, no issues with them. But then harmful ones particularly are showing their effect. And here what happens is, there could be, with the change in weather, new pathogens, advent of new pathogens, which could be catastrophic, and Corona has taught us a lesson. So, what and where we have the refuge? The story of human evolution shows from ape to man, the journey was nice, but from here, where? I'm not a pessimist, but then I find nothing really positive to talk about, and therefore here the last stage is shown to be we simply dissolving into the heat, and therefore I find it very difficult to promise anything that we can talk of until and unless we take care of the greenhouse gases, which seems to be a impossible proposition. Well, the way out has to be there, and it can be in the form of the policies, and of course we are talking of sustainable development nowadays. My apologies for short of time, and therefore let me skip certain things. What we are doing on our part is, we had Kyoto Protocol in 1997, and then we had subsequently the Paris Agreement, which essentially is certain kind of social and moral binding on the part of the different countries who have pledged to really bring down the greenhouse gases, so that we could somehow take at least the first step in taking care of this problem. Next slide, please. Paris Agreement to this date is considered to be something really that is promising. That's what it is all about. Next slide, please. And now, one more click. To me, like I said, how positive I am about climate change, not really much. Looking at the Western countries and the cooperation we are getting, even in the UN programs, it is very difficult to talk of positive steps that are being taken by the whole mankind. In fact, this picture speaks a lot. The scientists have been shouting on rooftops about the ill effects of climate change, and yet there has been, right, from the wealthier nation and the essential generator of greenhouse gases, about denying that there is global warming, there is a climate change, and people are still in denial mode, though we have both aspects of it going on, and therefore the ultimate catastrophe is the scientist. But then one should end up with a positive note, and well, we should never give up. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajiv, for sticking to the time. There was a small weakness. Yeah. I need just 2 more minutes for something. You want Just 2 minutes. wait, is it a video or? Okay. You want to show it now or at the end? Okay, quickly. Thank you very much. Will you put up, please, the other one? Now, one of the dangers of climate change is extinction. Who knows, human might become extinct, and I find this wonderful. Is there audio with it? Could you? I find this video very interesting in the form of the extinct race advising mankind not to really ignore this issue and get extinct. Or if it is taking time, what we can do is that during the discussion time we can show it. Okay, thank you very much. We will show it in the discussion time, and then we can take the dangers we are living in, the kind of contributions we are making to make this danger a crisis, and we are moving there. So individual actions to collective actions to national and the global actions are required. So you highlighted extremely well those points. Thank you very much for that. So we will take questions at the end of, if you have any questions, please take note of it. We will take those questions at the end. So now I call upon Professor Bipin Jojo. He has been working for several decades with indigenous communities, Adivasis, and from his perspective on working with tribal communities and trying to understand their cultures,
which are in a way sustainable and which is under threat because of various environmental factors as well as mining and several other factors. He has been working extremely well in many of those areas. So he will be talking about social work intervention with tribal communities which are affected by climate change crisis and environmental crisis. Thank you very much. Professor Jojo. Thank you, Professor Sarjan. Respected colleagues, friends on the dais and off the dais, I thank NAFSWI and CSRD to giving me this opportunity to be part of this Congress, and also part of this Congress to share some of my thoughts or some of my ideas on this topic. So, whenever we hear about tribes or Adivasis, immediately it comes to our mind very colorful dresses, song, dances, the richness of their culture. In addition to that, probably I think it is important, keeping the theme in mind, I like to take us from this colorful image of tribes or the Adivasis to a little more serious discussions, serious things about their life connected to their environment and the topic which we are talking as climate change. Let me start with introduction about myself, though officially the organizers have given very, very generous introduction about me. I thank them, but without discounting the introduction, I'd like to introduce myself once again. As you know, my name is Bipin Jojo. And Jojo in my family or in my community means tamarind. The totemic name of my family is Jojo, which means tamarind, which all of you well aware of it. And interestingly, my father happens to be the head of the Jojo clan in our area. And he is supposed to take care of the people or the members of this Jojo clan. And interestingly, he has also planted a tamarind tree in front of our house to remind us that we belong to this clan and we are connected with this tree. And I think it is not only me as an Adivasi who has this particular clan, but I think there are many Adivasis within the country, like Santhal said, probably about, it is said that about 100 totemic names, who they have about 50, my community that is called Mundas have about 64, Wheels have 24, and so on and so forth. And each of these totemic names has a meaning. And this meaning connects them with nature, be it tree, fruit, animal, or any kind of animate or inanimate things. And so it also connects kind of a spiritual connection or a kinship with creatures or objects in nature, making the practice very similar to animism. Animism, as you all know, in anthropology or sociology, you all must have studied, which is a belief based on the spiritual idea that the universe and all the natural objects within the universe had souls or spirits. It is believed that souls or spirits exist not only in the humans, but also in animals, planets, trees, rocks, and all natural forces. And so many times you hear many of the movements or struggles wherever you have seen against the forest preservation or in the mines, they address the mountains as their spiritual being, or the earth as called Dharti Abba. They call it Abba, that is father. They don't call it is land which I plow, but it is my father or mother or my creator. So that kind of spiritual connection one can see with
with the nature. So the tribes or Adivasis are, as we all know, very, very well connected, having symbiotic relationship with nature. Next slide, second. Yeah. So I was saying that it has a very, very totemic name. It has a totemic community, which is based on the kinship, which builds on that interpersonal community bonding or community relationship, which has got connected with a certain kind of territory. It is not in isolation, but this kinship or totemic relationship, togetherness of the bonding has got certain kind of territoriality. So tribes, each of the tribe or the community have kinship along with that territory. And they have got their own traditional governance systems. And along with that, they have very close interaction or the relationship with their nature. Environment, that is land, forest, water, and flora and fauna within the forest. And it is not only just utilitarian relationship, but they have their own rituals, celebrations, festivals. The whole of their cycle of their life revolves around their nature. And third aspect is with their spirituality. So they have this strong relationship between the members, they have strong relationship with the nature, and they connect with their spirituality. And based on this aspect, they develop their own indigenous worldview or the way of life or the perspective. Next slide. When we talk of biodiversity, I think, next slides. And there are records or there are reports saying Chhattisgarh, Central India, during the time of independence, in the area of Chhattisgarh, that is former Madhya Pradesh, cultivated 19,000 rice varieties, which were suitable to the climate, soil, and other conditions. They also had 45,000 species of wild plants, out of which 9,500 species were ethnobotanical important species. There were 7,500 species were medicinal, which were used for their indigenous health practices. About 3,900 plant species were used for food, for various kinds of food, various kinds of fiber, fodder, using extracts for chemicals to be used for their as pesticide or insecticides, and also many species for extracting gums, resins, and so on and so forth. Next slide, please. So one can see that they had the forest or the nature around them, and so much of connection and the dependency with the forest. However, the paradigm of development or the paradigm development, what we understood and what we have understood, with the path of appropriating the natural resources like land, forest, water, to the fullest for the national development, for the growth of the country, for the development of the country. Unfortunately, this has denied the access of these resources to the indigenous people or the Adivasis. Because of that, they have changed their lifestyle in the name of development, be it in the food, the dresses, housing pattern, remedies for diseases, and so on and so forth. And we can see, I think, when we hear about climate change, immediately one can see, गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, untimely बारिश हो रही है, untimely temperature ऊपर नीचे हो रही है. So immediately it comes to our mind the kind of erratic rain, of extreme cold, and heat, flood, drought, and so on and so forth. And as Dr. Farif had already talked about why we are concerned about climate change today. And what is it that contributing climate change? And one of the things he talked about is the major, out of many contributors to all this issue of the climate change, I think the fossil fuel, what Dr. Arif talked about, and use of coal and other kind of minings, and other multiple sources, and use of agriculture and other things. And because of that, millions of people are affected. You and me, all of us are affected. But what is important is the people who are associated with these resources
And the people who are vulnerable, I think they are the most affected people in terms of their food, water, livelihood security, migration, forced migration, loss of cultural identity, and so on and so forth. Next slide, please. So if we look at the maps, the central map is the map which talks about around the country, the kind of minor forest produces are being collected from the forests. And on the left side, the map which talks about the green talks about or also indicates the forest cover of the country. And if you juxtapose the tribal map along with this green map, and on the third right side of the map, which you can see the colorful dots, which are the mining deposits or the minerals deposits of the mining activities in the country. So if you juxtapose the population of the tribes in the country, the forest resources and the mining, somehow they overlap. And the kind of forest resources and the dependence of the forest, one can see that around the country, the multiple kinds of forest resources which the people, the communities have been collecting and they have been living with this. Next slide, please. And one of the reasons for all this extracting fossil fuel, especially in the tribal areas, I think coal, bauxite, and many such industries or many such minerals, and central India, especially Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, considered to be 40% of the mineral resources of the country deposited in this region. And one of the immediate concern or the result of this mining is deforestation. So according to official statistics compiled by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, a total of 1,500,000 hectares of forest were diverted between 1980 to 1919, and more than 500,000 hectares for mining, and the rest for thermal power, transmission lines, dams, and other projects. So you can imagine that the kind of deforestation has been taking place because of the mining, largely coal mines, bauxite, iron ore, and so on and so forth. And in last 3 years, 15 to 18, the government of India has given forest clearance to the multiple states, and the states account about 35% of India's forest cover in these states, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Karnataka, Jharkhand, which produce large or probably maximum amount of coal and of the country. Some of these states have recorded the forest cover decreasing in the recent past, and largely coal mining one can see in these states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand. Next slide. And out of this changes, the kind of social dimensions to the climate change, I think I'm more concerned. Professor Arif is from natural science, so he talked about all hemisphere and everything, he explained very nicely. But as a social scientist, social worker, educator, researcher, I'm more concerned about the social aspect of this climate change. And the World Bank says, as the climate continues to change, millions of poor people face increasing challenges in terms of extreme events of health, food, water, livelihood, security, migration, forced displacement, loss of cultural identity, and so on and so forth. I come from one of the most industrial districts in the country, that is Sundargarh district of Odisha. To my surprise, during this COVID, different state governments were taking initiatives, and the first phase, that is the lockdown period, the governments, state governments asked their citizens to register on the portal, whoever wants to come back. And interestingly, I requested the district collector, because we are also helping out to reach out the relief materials and helping out and reaching out to them in crisis. And interestingly, I could get the data of 1 lakh tribals from my district. And the kind of desperation and the kind of helplessness all of us have gone through it.
But what is most important is we see that industries bring in development, growth and development, and solve poverty. When I collected this data, we reached out directly on phone 10,000 of these people. And I tried to process where are they from. And interestingly, when I mapped with the region from my district, I found that the people who are coming most are from the industrial areas. So the whole theory of industries with development and so addressing all the issues of poverty, employment, and all this, I found it is countering that theory. So if the more and more people are migrating from the area of higher industrialization, I think the theory has gone wrong. Okay, so this is one I think attention which is coming out, which is part of the climate change. I like to share, it is not my case study, but I'm using one of our young journalist case study narrative, and talks about a tribal woman from southern part of Orissa. And this is where I draw all of your attention that in this kind of crisis, what is the way out? And that's where I think I say that I think one of the way out is to fall back to indigenous knowledge system or traditional wisdom. There was a millet, or there are several kinds of millets, and millet used to be grown among all the tribals in the rural areas. But the kind of color or racism used with the millet, that millet looks a bit of dark and rice looks white. Okay, in that process, rice got introduced and millet got extinguished. and seeing that kind of ये काला दिखता है, ये काले काले चीजों को क्यों खा रहे हो? चावल खाओ, कितना अच्छा दिखता है. In that process, people have stopped growing millets. And recently the government of Orissa has started the millet mission. And they have been trying to regenerate the interest to cultivate millets. And we all of us know how the millets are how rich in terms of its nutrients. And in cities we know how expensive it is. I buy in Mumbai millets, half a kg of 90,000, 95,000, half kg of millets, different kinds of millets. So in the villages they have stopped cultivating, and in the city we are buying either most healthy food or the part of the health food. And this lady or this Adivasi woman said they were still cultivating sifting cultivations. And she said, since the time of our forefathers, Dangal Chas, that is the sifting cultivation, has been feeding our people. This is the Bonda community, which is very unique to the region in terms of their eco-friendly method of farming in this kind of slopy hillocks. What she said, we start preparing the land during summer. Shrubs and bushes are cleared, weeds are burned. We never cut fruit trees and medicinal plants. After the first spell of monsoon rains, we start cultivation in May. We sow paddy, millets, pulses, tubers, multiple crops. And we protect the crops from wild animals. Harvesting starts between November and January. So they have continued their traditional cultivation, multi-crop pattern, and without affecting their large trees or medicinal plants. Once she was asked about the pesticides and insects, she said, we don't use chemicals, but allow birds, insects, snakes to prey upon their insects and pests. This is the natural way of protecting our crops. They are the living organism, are part of Mother Nature. Last year, that is 2020, because this article was written in 2021. And last year, that is 2020, she said, we harvested about 100 kg of finger millets, 60 kg of barnyard millets, 45 kg of pearl millets, 70 kg of sweet potatoes, 40 bags of elephant yams. And we earned about 8,000 by selling part of this harvest at the local market. With this money, we bought a pair of goats, purchased few things about their houses.
I was telling about this millet mission in Odisha, which has initiated to plow or to cultivate and start interest among the people who had lost cultivating millets. And this has been part of their whole traditional food system and part in, cultivated within their own traditional knowledge system. And the way forward, my last slides, I see that as social workers, practitioners and concerned citizens for climate change, I think it is very important for us to recognize the uniqueness of the Adivasis or tribal communities across the globe, and for us probably in India, for the sustainable practices which are rooted in their culture and languages. Languages I connect because with the languages all these traditional seeds, pesticides and everything is connected. The moment their language gets extinguished, this knowledge system gets disappeared. Based on their environment and biodiversity, they also have their own indigenous philosophy and their own way of environment conservation. It is very important for us to understand, recognize and preserve and promote. When I say indigenous knowledge, they have got their own knowledge system, which probably people today call it a traditional knowledge system or indigenous knowledge system. And when we call up indigenous knowledge system, they have got their own epistemologies. And I am part of one of the international studies on health, well-being and indigenous knowledge system, which is covering 25 countries around the globe. And we are trying to look at how their knowledge system is connected with health and well-being. Preventing technologies from eroding the foundations of equality, human dignity on which our political and social systems rest. We need technology, no doubt about that. But however, it should not destroy the whole values, ethics at the cost of technology, at the cost of development. There is a debate. At the end, I'd like to say that growth, progress, equity, there is a debate I think one has to engage in. Rights versus development. We are talking about, as social work practitioners and educators, we talk about rights of Dalits or tribes or women or any kind of marginalized groups. At the same time, I think that discourse on development comes on the way. So when the tribals or Adivasis are struggling or resisting any kind of development projects in the name of mines or industries or roads, highways, are the rights provided by the constitution, the state comes in, these are all accepted, but we need development. What does this development mean? And at which cost? And at the end, probably, we all of us have to pay the price, but probably the people who are connected, who are living with this nature, the biodiversity, I think they're the most who have to pay the price the most. Thank you. Thank you very much, Professor Jojo. That was an interesting, analysis on how the totemic relationship which the Adivasis are having with the entire idea of Jal Jungle Zameen idea. How do that is related to environmental sustainability, which is under severe threat in today's world. And in the name of development, we were quite often talking about in the case of mining and all, we talk about mining as something which is anti-tribal. But it's not about whether to have development or not. But the question is that this discourse about Adivasis versus development has to change. It is a discourse about survival. It is a discourse about the actions against humanity. If you look at the larger impact of such processes happening, where the indigenous knowledge systems which he was highlighting, which quite often ignored, and we go for the Western, Eurocentric, Anglo-Saxon knowledge, which is actually the base of all of these ills which we are talking about. So thank you, Professor Jojo, for highlighting those very, very interesting ideas. I'm just compelled to say, when you were showing that map, I think if you show that map of Maoism or this red corridor, it exactly overlaps. So it talks about how unrest is being created because of such, what you call mindless policies of extracting, extractive industries and extractive policies of the state, how it leads to not only survival, threatening the survival, but also creating much more unrest in the name of conflicts and, difficulties of that kind. Thank you very much for this.
the last speaker of the day, Professor Keshav Walke. He will also be talking about forest communities and how social work interventions in those areas could be strengthened to ensure that the sustainability become a plural concept, sustainability become a collective idea. So over to you, Professor Walke. Thank you, Shahzan sir. My other colleagues and co-presenters of this session, respected dignitaries and dear participants. मेरा बहुत सारा काम जो सर ने कम कर दिया है, क्योंकि मैं रूरल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ और ट्राइबल्स को हम लोग उनसे अलग नहीं कर सकते हैं, तो ट्राइबल पार्ट जो है कम कर दिया। तो मैं स्ट्रिक्टली आई विल टॉक ऑन फॉरेस्ट एंड रूरल कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो अबाउट 2018 का जो डेटा है उसके हिसाब से 8,02,088 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है that is covered by the forest, which is equivalent to 24.39%. In 21, it is 7,13,789 square kilometer, which comes to 21.71%. लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन 19 और 21 के बीच में अगर देखते हैं, ये गवर्नमेंट का ही डेटा है, 1,540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्रीज हुआ है करके या यार्ड हुआ है करके बोला गया है। आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज द गवर्नमेंट डेटा। और इंडिया जो टारगेट करता है 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया दैट शुड बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, ये टारगेट है। उसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो 75% से ज़्यादा कवर करने वाले जो स्टेट्स हैं, देयर आर अराउंड 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज। 10% जो है से कम जो फॉरेस्ट एरिया है वो 7 स्टेट्स हैं। एंड एरिया वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाले हैं। और परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार दैट constitute about more than 80% of the geographical area covered by the forest. मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो टाइगर को नहीं छोड़ सकता हूँ। टाइगर की पॉपुलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो आज की घड़ी में अगर जो डेटा है गवर्नमेंट का 2018 का और जो NTCA जो है नेशनल ट्राइबल कंजर्वेशन अथॉरिटी उनका दिया हुआ डेटा है, तो आज की घड़ी में हमारे इंडिया में 2,967 टाइगर्स आर देयर। इसका रिलेशन है, इसलिए मैं वो टाइगर की संख्या ले रहा हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर को सेव करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल इंडिया में लास्ट 2 इयर्स तक देयर वर 50, नाउ देयर आर 53 टाइगर रिजर्व जो 18 स्टेट में 18 स्टेट्स में है। वो एरिया अगर हम लोग देखते हैं तो 73,765 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है दैट इज कवर्ड बाय दिस टाइगर रिजर्व, जो 2.24% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का उसका एरिया आता है। और अगर इसका अंदाजा मतलब हम लोग रेशो देखें पर टाइगर, वो इसलिए मैं निकाला हूँ, बाद में उसके बारे में बात करूंगा। 24.86 स्क्वायर किलोमीटर पर टाइगर ये एरिया अवेलेबल है कैलकुलेशन। उसमें टाइगर की संख्या बढ़ी है दिन ब दिन। 14 और 18 में अगर हम लोग फर्क देखते हैं तो वो भी हमको मिल जाएगा। ये मानना है NTCA का कि बिकॉज ऑफ टाइगर रिजर्व 2.5 मिलियन मैन डेज आर जनरेटेड which are going to benefit the local people और approximately 7,000 people per year। टाइगर रिजर्व जो है 1/3 हाईली डेंस फॉरेस्ट जो है वो कवर करता है एंड मोर देन 350 रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइगर रिवर्स और टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व की वजह से जो रिलोकेशन हुआ है, आई विल नॉट से रिहेबिलिटेशन, इट्स अ रिलोकेशन। वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ डेलिबरेटली आई एम यूजिंग दैट वर्ड रिलोकेशन, नॉट रिहेबिलिटेशन। मेड़घाट के 3 गांव आइडियल विलेज करके माने जाते हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, कोहाकुंड और बोरी। मैं 2000 से जिस दिन वो डिस्प्लेस हुए थे, डिसलोकेट हुए थे, उस दिन से मैं वहाँ विजिट करता हूँ। जो कंडीशन उस वक्त थी उससे बेकार कंडीशन आ गई। और फॉरेस्ट पीपल क्लेम दैट दीज आर द आइडियल विलेज, रिहेबिलिटेटिव विलेजेस। तो ऑल इंडिया की अगर हम लोग सिचुएशन देखें
तो around 56,247 families from 751 villages across the 53 tiger reserves are affected, and around till now only 23% of the villages families and 21.91% villages are relocated or resettled. Means 75% of them are still in waiting when they are going to be relocated or displaced. जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पहले हार्डली 1 लाख दिया जाता था घर बांधने के लिए और प्लॉट देने के लिए. नाउ दैट हैज इंक्रीज टू 10 लाख रुपीज पैसा दिया जाता है. और ये क्लास जो है पर फैमिली का है, और जो एक मानना है उनका कि 18 साल से ऊपर जो है अब वो 18 ईयर्स, उसको एक अलग फैमिली मानी जाती है. तो एक घर में अगर एक फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ और उसके 2 बेटे अगर 18 ईयर्स के अबव है तो दे आर गेटिंग 30 लाख रुपीज. और रिलोकेशन प्रोसेस जो है उसका एक बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आरएनआर पॉलिसी है, बट एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके साथ में उसको जोड़ दिया जाता है, ताकि जो पैसों का जो कॉस्टिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से लेने की कोशिश की जाती है. इसमें ये हो गया. बीच बीच में हमको सुनाई देता है कि टाइगर अटैक्स, लोग मर गए. तो एवरेज में केवल सुंदरबन की अगर मैं बात बताऊं तो 50 साल के ह्यूमन किलिंग जो होता है वो आपके लिए सुंदरबन का है. सुंदरबन जाने की जरूरत नहीं है. मेरे गांव का जो चंद्रपुर है, जिसको कैपिटल ऑफ द टाइगर बोला जाता है, कल की फिगर जो है पूरे साल की, कल तक की, कल 2 गए, उसके पहले 47 थे, कल के 2 पकड़ के 49 हो गए एक साल के. चंद्रपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है. दूसरे टाइगर रिजर्व की संख्या ही नहीं पकड़ रहा हूं मैं. तो ये है टाइगर ह्यूमन किलिंग बाय द टाइगर्स. ये तो मैं, और सुंदरबन की अगर एग्जांपल लेते हैं तो पूरा जो रिक्वायरमेंट है वहां के टाइगर्स की, ह्यूमन जो है ओनली 3% फुलफिल करते हैं उनका टोटल जितना रिक्वायरमेंट है उसका. और टाइगर की भी डेथ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है. टाइगर की डेथ अगर 100 टाइगर्स की अगर डेथ होती है तो अराउंड 75 to 80% ऑफ द टाइगर्स का डेथ जो है वो इन फाइटिंग में होता है या नेचुरल डेथ होता है. आई विल गिव एग्जांपल. जब भी मैंने जो फिगर दिया था पर टाइगर कितना जंगल अवेलेबल है, तो एक मेल टाइगर के सर्वाइवल के लिए मिनिमम 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रिक्वायर्ड होता है. अगर उस एरिया में दूसरा मेल टाइगर, 10 फीमेल रह सकती है, लेकिन दूसरा अगर मेल टाइगर आ गया, दोनों में इन फाइटिंग होती है, और वो तब तक होती है जब तक एक मरे नहीं या एक भागे नहीं. दूसरा भी जख्मी होकर रहता, बाद में वो भी मर जाता है. तो दैट इज द मेन रीजन. 75 to 80%. पोचिंग में हार्डली 10 to 15% है, और अननोन रीजन के लिए 10 to 15% ये होता है. अब ये जो ह्यूमन एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे के जो भी रीजंस है, एक तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हुआ है वो कहां पर, जहां पे टाइगर की संख्या ज्यादा हुई है. जैसे पूरे भारत में अट्रैक्शन चंद्रपुर है, ताड़ोबा, क्योंकि वहां टाइगर की संख्या ज्यादा है तो साइटिंग ज्यादा होती है. बाकी जितने भी जानवर होंगे देखने के बाद में घूम के आएंगे, सब मिलेंगे, लेकिन आखिर में नाराजगी जरूर होती है, यार सब दिख गया, टाइगर नहीं दिखा. तो दैट इज द रीजन फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसके हिसाब से जो प्रोहिबिशंस है, मेरे वक्त नहीं थे. अगर उस वक्त मैंने तेंदुपत्ता और महुआ चुना नहीं होता तो आज आपके सामने खड़ा नहीं होता. वो जो सोर्सेस थे आज टोटली बंद हो गए बिकॉज ऑफ टाइगर रिजर्व. जो लोकल लाइवलीहुड का जो एक ऑप्शन था, जनरेशन होता था, इट इज नॉट देयर नाउ. इवन मैं पूरा जंगल घुमा हूँ, आज अगर उसी जंगल में मेरे को जाना है तो मेरे को टिकट लेना पड़ता है. अर्लीवर कोई पैसा नहीं देना पड़ा, फ्रीली में पूरा जंगल घूम लेता था. तो दैट इज द कंडीशन. डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर अदर कमर्शियल पर्पजेस. उस दिन हम 4 लोग नागपुर से आ रहे थे. 11 तारीख को मोदी जी का भाषण सुना था. ये समृद्धि के रोड पे 5 लाख पेड़ लगाए हुए. हम लोग एक तो भी ढूंढ रहे थे पूरे वहां से. नॉट अ सिंगल ट्री इज देयर. नॉट अ सिंगल ट्री. 5 साल का प्लान है. 5 लाख ट्री है करके हम लोग आए वहीं से औरंगाबाद तक. 4 घंटे में जरूर आए.
जो पहले 9 घंटा लगता था 4 घंटे में पहुंचे। लेकिन जो विकास हम लोग बोल रहे हैं, तो केवल सीमेंट का कवरिंग करना लैंड को, दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ विकास। और ये विकास जो है, हरदम ये विकास के लिए लैंड जाती किसकी है? रूरल पीपल। किसके लिए? सो कॉल्ड अर्बनाइज और सिविलाइज हम लोग, उनके लिए। उसका हर एक का बेनिफिट मिलता किसको है? अर्बन लोगों के लिए। और पूरा एक्सप्लॉयटेशन या लॉस जो है वो पूरा ग्रामीणों का है। एंड दूसरी एक बात, अभी टाइगर्स की संख्या बढ़ गई, जंगल कम हो गया है, तो इन सर्च ऑफ फूड और उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड द विलेजेस एंड दैट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। मैंने लिमिटेशन तो अभी मैंने बात किया, इवन हमारे जो जानवर है वो भी कराने के लिए वहां पर आजू बाजू भी नहीं जा सकते हैं। एंड बेसिक पर्पज जो है टाइगर का, हम लोग टाइगर रिजॉर्ट का, टू प्रोटेक्ट द टाइगर की बात करते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं है। सवेरे 50 गाड़ी छूटती है गेट से, शाम को 50 गाड़ी छूटती है, 100 गाड़ियां तो अंदर जा रही है, नाइट सफारी भी चालू हो गई है। तो इसके जानवरों की प्राइवेसी कहां गई? ये भी तो एक सवाल है। जब हम लोग पहले रास्ते से जाते थे, मैं मजाक में बोलता हूं कभी कभी, टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है करके बोलते हैं, प्राइवेसी दोगे तो बढ़ेगा ना। ये वास्तविकता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो, और वहां के गांव जो है कोर एरिया में, उनको निकालने की बात हो रही है, लेकिन 5 स्टार होटल के लिए वहां पे जमीन जरूर मिल रही है। और 5 स्टार होटल किसको चाहिए? अगेन अर्बनाइज के। मेरे गांव वाले को टाइगर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी घूमते फिरते मिल जाता है। वीकेंड जिसको सेलिब्रेट करना होता है, जिसके पास में वीकेंड की नाम की एक कंसेप्ट है, उनको है सैटरडे संडे को जाना है, घूमना है और उनको देखना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके दिखाने के लिए टूरिज्म डेवलप हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट विलेजर्स और रूरल पीपल आर सफरिंग। अनदर रीजन, नो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जो है, उनके फॉरेस्ट राइट्स की अगर बात करते हैं तो उनका इंडिविजुअल राइट बहुत मैटर है। बट CFR की हम लोग अगर बात करें, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की, तो उनकी केसेस SDO से तो निकल जाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में पड़ी रहती है। बीच में फिर फॉरेस्ट वाला बोलता है कि ये जमीन हमारे जंगल के जानवरों को चाहिए, तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, तो वहीं पे रुक जाता है। हैरेसमेंट, जो लोकल ऑफिशियल्स है उनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये तो मैं बात कर चुका हूँ, डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा। बेसिक बात जो है, रूरल पीपल या ट्राइबल पीपल, दे आर नेवर अगेंस्ट द फॉरेस्ट, दे आर फॉरेस्ट लविंग पीपल। जैसे मैं बचपन की बात कर रहा था, मेरे बचपन में मेरे गांव में किसी के पास में स्टूल नहीं था, चेयर नहीं थी बैठने के लिए, ना सोफा था, ना पलंग था सोने के लिए। एक 4 पहिए वाली खटिया हुआ करती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई गेस्ट भी आया तो वहीं बैठता था, सोता भी वहीं था। जैसे जैसे रिजर्व फॉरेस्ट बना, फॉरेस्ट वाले आए और मेरे गांव का जो कारपेंटर है उससे अपने लिए पहले सोफा पलंग सब बनवा लिया। तब मेरे गांव वालों को भी पता चला कि जो मेहमान आते हैं उनको यहाँ बिठाया जाता है, तो उनके लिए एक बनाया, 2 इधर बेचने के लिए बनाया साथ में। एंड जो कारपेंटर है वो कमर्शियलाइज हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हम लोग शेयर कर रहे थे बीच में, कि मेरे गांव के बाजू में एरिया, उसको चंदन बाग बोला करते थे। और मेरे दादाजी के साथ में खेत में रखवाली करते समय हम चंदन की लकड़ियां जलाते थे बचपन में। आज मरे हुए को वहां पे जलाने के लिए भी वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिलता है, दैट इज द कंडीशन। तो जो गांव वाले नेचुरल थे, इनोसेंट थे, उनको हम अर्बनाइज लोगों ने क्या किया है, कमर्शियलाइज बनाया। तू तेरे लिए भी एक ला, हमारे लिए भी एक ला, जंगल का जो होता है वो देखा जाएगा। तो दैट इज दैट। ये तो मैंने बात कर चुका हूं। जब भी जैसे मैं बात कर रहा हूं वीकेंड सेलिब्रेशन करने की, तो गांव वाला अगर बंदा, गांव वालों को वहां से निकाला क्यों जाता है कोर एरिया से, तो जब वो गांव वाला बंदा अपने बैल मंडी लेके, बुला काट लेके खेत में जाता है, कुछ
जरूरत की चीजें लाने के लिए जाता है तो टाइगर को तकलीफ होती है। और जो हम लोग हमारा वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जब तीन बातें बहुत जरूरी होती है, शराब, शवाब और कबाब, और ये तीन बातें लेके जाते हैं और हम लोग वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं, 100 गाड़ियां छोड़ते हैं, रात को सफारी के लिए छोड़ते हैं, तब क्या टाइगर डांस करता है क्या? ये भी तो सवाल है। तो जो एनवायरमेंट बैलेंस की बात है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। ये कुछ मैं सोशल वर्क इंटरवेंशन की बात कर रहा था, तो ये लोगों के डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें हम लोग, तो कुछ बातों को देखने की जरूरत है। आई विल शेयर दिस पीपीटी इन द ग्रुप। तो उस वक्त बेसिकली मैं एक गांव में काम कर रहा हूँ, जनरली फॉरेस्ट वाले मुझे भड़काने वाला बोलते हैं उनको। तो उस गांव में मैं जाता हूँ, उनको FRA के बारे में केवल ट्रेन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो मेरे नाम से गेट पे एक चिट्ठी लगी हुई थी, नोटिस, कि केशव वाल के यहाँ का प्राध्यापक यहाँ पे आके लोगों को भड़काता है, पुनर्वसन के लिए तैयार नहीं होने के लिए बोलता है, अर्थात सरकारी कामों में कठिनाइयां पैदा करता है, और इसलिए यहाँ से इसको जाने का परमिशन नहीं है। कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला, वहां से लिया, फिर से जाता हूँ लीगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो गांवों को रिहैबिलिटेट, वो डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस में है, तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो अभी तक वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है। एक ही डिमांड रखी हम लोगों ने, अगर मेरी जितनी जमीन ले रहे हो भैया, उतनी जमीन हमको दे दो, ताकि हम लोग उसके ऊपर अपना गुजारा कर सके। वही नहीं दे रही गवर्नमेंट, बाकी सब दे रही है। नए लोकेशन में मिनिमम 18 अमेनिटीज होनी चाहिए, ऐसा कहना है। तो जो गांव दिया है वहां पे जाके देखा मैंने, बोर्ड लगा है सार्वजनिक शौचालय, बोर्ड है, वहां से 2 किलोमीटर तक इधर देखो उधर देखो, कहीं पर भी सार्वजनिक शौचालय नहीं। तो 18 अम्यूनिटीज की जो ये कंडीशन है। तो जब हम लोग रिहैबिलिटेशन, वातावरण वाला, अगर मैं नागपुर की अगर बात करूं, में 8 है, तो वहां पे जमीन जो है टाइगरों के लिए है, तो बिजनेस करने के लिए मिल सकते पास में। तो आदिवासी ये तो केवल 23 परिवार है, 5-5 एकड़ भी एक को देने की जरूरत पड़े तो हार्डली 115 एकर्स ऑफ लैंड विल बी रिक्वायर्ड। तो दी जा सकती है, लेकिन दी नहीं जाती है। तो ये सब मैं इसलिए ये सब बैकग्राउंड बताया कि इसका असर जो होता है अल्टीमेटली फॉरेस्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की हम लोग बात करते हैं। जब भी जो सर ने प्लान की बात की, तो प्लान 750 नंबर आप लोगों ने देखा होगा, आदिवासी में जनरली 750 नंबर है, कम से कम हमारे तरफ जो गोंड आदिवासी उनके इसमें 750 नंबर दिखता है, जैसे मोमेडियन में 786 की बात करते हैं। तो वहां की मान्यता के हिसाब से देयर आर 750 काइंड ऑफ गोत्राज या क्लास। एक गोत्रा जो है वो एक बर्ड, एक एनिमल और एक ट्री को भगवान मानता है, उनको वो कभी काटेगा नहीं, मारेगा नहीं। तो ऐसे 750 काइंड ऑफ ट्रीज, 750 काइंड ऑफ birds and 750 kind of animals are indirectly protected, which are leading to the environment balance. ये आदिवासी में हमको देखने को मिलता है। और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो या उसके जो अलग अलग डायमेंशंस है, वो माइनिंग की वजह से हो, डैम की वजह से हो, टाइगर रिजर्व की वजह से हो, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से हो, अल्टीमेटली जंगल को काटता है। जब भी मैंने 5 लाख पेड़ों की बात की, नाम भी बहुत अच्छा है, समृद्धि। समृद्धि किसकी, ये सवाल है। जिनकी जमीनें गई उनकी तो समृद्धि नहीं है, वहां पे पैसा मिला, लेकिन जिसने कभी एक साथ में 1 लाख रुपया नहीं देखा, उसको लाख रुपया देने के बाद में उसका करना क्या है ये पता नहीं हो रहा। दूसरा वातावरण तैयार करके देती है गवर्नमेंट, जो नया रिलोकेशन वाला जो एरिया रहेगा उसके बाजू में एक लाइसेंस वाला कमरा जरूर दे देता है, मतलब बार परमिट। मतलब तुमको जितना भी मिला है भैया, पहले भोजारा वहां पर दो और बाकी की बातें बाद में करो। तो मैंने देखा है जो गांव उठे हैं, वहां की स्थिति 1 साल में
अभी उनके पास में ना रोजगार है ना और कुछ है। तो जो लोग नेचर लविंग पीपल थे आज, और मेन क्या है उनका स्किल कौन सा है? एग्रीकल्चर। जो स्किलफुल थे वहां से निकाल के हम उनको अनस्किल्ड लेबर बना रहे अर्बन के पास में लाकर, क्योंकि वो स्किल यहाँ पे जो काम की स्किल लगती है वो उनके पास में नहीं है। ये अगर हम लोग उनको वहीं पर, पहले भी रहते थे ना लोग, वाइल्ड लाइफ भी रहता था साथ में, हमारे रूरल पीपल भी रहते थे, आदिवासी भी साथ में रहते थे, इसलिए जंगल भी दिखता था, जानवर भी दिखते थे। आज वो कम हो गए जब से प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर हुआ। तो मैं सबमिशन इज हियर कि रिलोकेट करने की जरूरत नहीं है। वातावरण को अगर बचाना है तो जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है लोगों के जो मानते आते थे, उनको अगर प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में लाइवलीहुड के अगर ऑप्शंस उनके पास में जो अवेलेबल थे वो अगर हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रूरल पीपल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आदिवासियों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द express my gratitude to the organizers, chairperson of this session and my co-presenters. Thank you so much. वो वीडियो जरा प्ले करने के देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर केशव। Actually, you have really enlightened us about the reason for human-animal conflict, which is being talked about, but the actual, root cause of such conflicts are never being talked about. We talk about, human-animal conflict. Recently, we read the news about a tiger is being caught from urban building in Mumbai, near Goa. So these are the kind of conflicts which is coming in. The vicious cycle of, development, disruption to the environment and ecological conditions, and finally leading to destruction, which is a product of ecological imbalance we are continuously, instigating on the nature. So this is where I think all the three panelists have actually talked about, one from a scientific perspective about how this nature is being tampered upon with by each one of our contributions. Second, about the policy contributions. Three, about the way we look at development and change and growth in that sense. So the progress is something which is far and dream. So thank you very much for all the three panelists. Extremely enlightening session. We will have a few minutes to ask a few questions. In the meantime, if the video is being played, we can do that. So till it is being arranged, anybody would like to ask any specific questions to any of the panelists? Please. We will have, maybe we'll take another 5 to 7 minutes to some question and answer sessions. Yes. Yeah, sir. Yeah. सर आपने सवाल आपके लिए है। आपने कहा कि समृद्धि महामार्ग के दुतरफा जो पेड़ है या जैसे इंटरव्यू में मिनिस्टर साहब ने भी बोला था कि उनको कॉम्पेंसेशन मिला। आई वुड लाइक जस्ट हाफ a minute I will say. Few years back, any party in one of his lectures in Turks has said that when we were dependent on the foreign agriculture produce, at that time all foreign countries used to see India in a very, very underestimated manner. We are underestimated. Now here we are progress agriculture. Now we are acquiring the what is called a land of farmers. But my question is like this, that Mahamarga, bridge, etc. it is required, but can there be a technology whereby farm will remain same, but roads will be made either underground or overbridge? Can it be done? Can social workers put a pressure on government for that, and so that farmers' identity, their self-respect will be maintained? They will, for example, आपने कहा कि 1 लाख रुपए है तो वो कहाँ खर्चा करना है मालूम नहीं है, वो कहीं भी करेगा। कुछ मिनिस्टर साहब ने बोला कि उन्होंने दुकान डाले, सब डाले, लेकिन my question is, by keeping intact the rural identity, rural self-reliance,
can development be possible, and where social workers can they put pressure to introduce either जहाँ पर ये ब्रिज है, जैसे ब्रिज है या अंडरग्राउंड, ऐसे रोड क्यों ना हम बनाएं ताकि सब इंटैक्ट रहे? Can it be done? Okay, so we will take a couple of questions together and then we can answer. Any more questions? Yeah, sir, Mr. Balgopal. Can someone give? I would like to ask a question. I was very much distressed about 5 years ago of my beloved Vidarbha. And I cried. The genetically modified farmers in hundreds and thousands suicide. I cried, literally. And that's why I call it my beloved Vidarbha. I don't call it Maharashtra. I belong to Vidarbha. You belong to Vidarbha. What is the status? Is it still dying? And what are they doing? I want to raise this unpleasant question. Is there a balance? Or is it all talk of Maharashtra government? And am I making something unpleasant and people don't want to tackle it? Thank you very much. Any more questions? Anyone? Okay. So by the time you have a question? Yeah. All right. Please. सर मान लीजिए एट ए टाइम हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जिसमें हमको इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में दोनों में से किसी एक को पिक करना है। हम उस पिक पॉइंट पे पहुंच ही चुके हैं, या तो डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट। प्रीफर क्या करें? Yeah. All right. Okay. Anuj ji, yeah. The last question and then we'll. Hello. Thank you very much, Professor Sajan. This is not my question. Basically, there are two incidents related to my experience. One is related to the land compensation to the farmer, and the second one basically related to the human-animal conflicts. I am basically the member of all the expressway of the UP, like the Bundelkhand Purvanchal Expressway, SIA committee member, as part the Land Acquisition Act. जैसा आपने बताया कि पैसा कहाँ मिलता, तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि एक फार्मर को जो पैसा दिया गया उसको बेसिक प्रोग्राम को था दलित कम्युनिटी, और दलित कम्युनिटी होने के नाते उसके पास में उसके जो लैंड ओनर्स थे, जो बाहुबली थे, उनकी लैंड को जो है उन्होंने कैप्चर कर रखा था, मगर एज पर द रिकॉर्ड कंपनसेशन जो है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। दे गॉट 35 लाख रुपीज़। जिसके पास में खाने को पैसा नहीं था उसके पास 35 लाख रुपीज़ एक पहुँच गया। That basically my point is that there is no programs for the rehabilitation and the training program, the skill development program, and how to use the money. So that उसने क्या काम किया, 35 लाख रुपीज़ अपने एक निकाल लिया अकाउंट से और उसको लेकर के टहलने लगा और बेसिकली गॉन मेंटली, और उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर द 1 वीक उसकी डेथ हो गई। This is the main incident. The second incident is related to the basically tiger PGP tiger reserve area. One is a scholar doing the my supervision. एक ये इंसिडेंस देखने को निकल के आया है कि बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोटेक्टेड एरिया अगर टाइगर वहाँ पे किसी ह्यूमन एनिमल का अटैक हो जाता है तो दे विल गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग यहाँ तक गिर चुके हैं। सबसे खास बात ये देखते हो कि वहाँ के सराउंडिंग जो रूरल पीपल थे वो लोग उन्हें अपना क्या काम, जो सीनियर सिटीजन ओल्ड पीपल रहे हैं, उन ओल्ड पीपल को भेजते थे कि अंदर का आप जाके जंगल में काम करिए जा करके, और ये इंतजार करते थे कि हाँ किसी एनिमल ने अटैक करे, वो एनिमल अटैक करने के बाद उनको कंपनसेशन देते थे। देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशन विद इन That's an addition. Okay, I think now we will request Professor Keshav Walke to address the question on development without destruction possible. That's a question, and of course what Professor Balgopal has asked about the question of Vidarbha. So would you like to answer those two and then? पहली बात डेवलपमेंट।
between them. I'm not against development. और ये भी होगा, जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो एक का नुकसान होगा, दूसरे का फायदा होगा. दैट इज नेचुरल. लेकिन उसमें कहीं तो प्रपोर्शन होना चाहिए ना. नुकसान होने वाले का कितना नुकसान हो और फायदा होने वाले का कितना फायदा हो, ये सोचने वाली बात है. जब तक इन दो बातों को हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक के ये भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमने प्रेफरेंस डेवलपमेंट को देना चाहिए या एनवायरनमेंट को देना चाहिए. थोड़ा सा मैं आगे जाके ये कहूंगा कि अगर मुझे मालूम है कि आज का डेवलपमेंट मुझे 10 दिन में मारने वाला है और वो 10 दिन के बाद में मेरी लाइफ बढ़ सकती है एनवायरनमेंट को बचाने के बाद, तो व्हाट आई शुड प्रीफर? 10 दिन में मरने वाला डेवलपमेंट प्रीफर करोगे? दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन. पहली बात. दूसरी बात, सर ने जो कहा फार्मर सुसाइड का जो है, उसके लिए 2-3 बातें मेन वहां पर जो कारणीभूत है. एक हमारे ट्रेडिशंस, दूसरा हमारा खेती करने का तरीका. फसल वाला जो ज्यादा कमाई देगा, वो जो हम लोग क्रॉप लगाते हैं, वो लगाने के बाद में जैसे इस साल हुआ, क्योंकि पिछले साल से मैं भी फार्मर बना था, पिछले साल खेती लिया, चला बोला मैं क्या होता है तो देखते हैं. तो इस साल मैंने भी खेती लगाया और जितना भी लगाया था कम से कम 3 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था. गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन मुझे दिया है 9,000 रुपया 3 लाख के नुकसान के लिए. अब नेचर जो है वो तो फार्मर्स के भी हाथ में नहीं है ना, गवर्नमेंट के हाथ में है. लेकिन नेचर की जब भी मार पड़ती है तो वहीं पे कोई ना कोई उनको संभालने वाला चाहिए. अब मेरी सैलरी अच्छी थी, मैं 3 लाख इन्वेस्ट कर सकता था, इसलिए मैं टिक गया. जिसने कहीं से 3 लाख रुपए उधार लाया होता और उसको केवल 3 लाख का केवल 9,000 रुपया अगर मिला होता और दूसरा कोई सोर्स अगर नहीं रहा होता, तो उसने उस परिस्थिति में क्या किया होता, ये भी हमको सोचने की बात है. तो पॉलिसीज और ट्रेडिशन, कभी कभी कर्जा हम लोग इसलिए भी ले लेते हैं, खेती के लिए कम लगाते हैं, लेकिन जो परंपराएं हमारी उनको पूरा करने के लिए हम लोग उसमें ज्यादा खर्चा होता है. जैसे लेंगे खेती के नाम पे, लेकिन खर्चा होगा बेटी और बेटों के शादी में, जो नहीं है वो भी दिखाने के चक्कर में, तो कर्जा हम लोग ज्यादा हो जाता और वो रीपे नहीं कर पाते और वो दूसरा कोई सोर्स नहीं मिलता है, देन इट लीड्स टू सुसाइड. दैट इज, मैं जो घुमा हूं उधर आजू बाजू के गाँव में, तो लेकिन उसमें भी सर सुसाइड में केवल ओबीसी वाला जो है वो ग्रुप ज्यादा दिखेगा, ट्राइबल कहीं नहीं दिखेगा. यू विल नॉट फाइंड सिंगल ट्राइबल जिसका लास्ट हुआ उसकी वजह से उसने सुसाइड किया रूरल पार्ट में, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है. और जो पैसे वाली बात है, इतना मिला, तो मेरा हरदम मानना है कि जब पैसा दे रहे हो तो उसको पढ़ा, तो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट क्या करना है. फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो अगर हम उसको पैसा देने के पहले अगर हम उसको लिटरेट कर देते हैं, तो दैट कैन हेल्प इन मैनेजिंग द अमाउंट. थैंक यू. Yes, sir. But one thing, what I would like to ask you is, we have been talking about the combination of technology and the climate change. Now we have found out that an Indian activist, Vandana, most of us who are activated and influential people who know Vandana, she is against the genetically modified seeds. Now, one has proven, why is it this Monsanto and all this nonsense, where I come from, that bloody state called Illinois-Iowa border, that is where I come from, and those are the places they sell the seeds, and I give lectures in my community, in my town hall, that you are killing my people. Now, what is it that's being done
in the area of development? जैसे जब भी हम लोग कंक्रीटाइजेशन की बात कर रहे थे, रोड्स की बात कर रहे थे, इतना केमिकल यूज हो गया है कि अभी जो प्रोडक्शन भी होता है वो भी पूरा मिक्स, या जिसको हम लोग एडिल्टरेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वैसा हुआ है। तो प्योरिटी कहाँ मिलेगी, आई डोंट नो। एंड बिकॉज ऑफ दैट हर कोई कम खर्चे में ज्यादा मिले, ये भी है। और मार्केट में जो प्राइस मिलती है फार्मर्स के, जो भी प्रोडक्शन है उसको, एक फार्मर आपके बाजू में बैठा है सर, संजय, तो मार्केट वो फार्मर जो है हार्डली 2 या 3 रुपए में टमाटर बेच रहा है, लेकिन वही टमाटर हमारे पास में जब आता है तो 40 रुपया हो जाता है। तो फार्मर्स को जो बीच में हमारा एजिटेशन भी था, बहुत दिनों तक चला 3 लॉ के खिलाफ, एमएसपी जो हम लोग बोलते हैं, वो अगर एक गारंटी हो जाए कि उतना मिलेगा ही, तो उनको सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा सपोर्ट जरूर हो सकता है। थैंक यू। Thank you very much. गुड इवनिंग टू ऑल। गुड आफ्टरनून से शुरू किया था, गुड इवनिंग तक आ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। सर, जीएम क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा मैं, या कि बेसिकली 2 बातें। एक सर ने जो जीएम क्रॉप्स के बारे में कहा, तो मोसैंटो इन्होंने जीएम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की। इनकी बिजनेस पॉलिसी, दिस इज शेयर बिजनेस, दिस इज शेयर स्टोरी ऑफ ग्रीड, नथिंग बियॉन्ड दैट। ग्रीड कैसे है और बिजनेस कैसे है? हमारा किसान पहले जब फसलें लगाता था, उसमें से जो अच्छे बीज होते थे उन्हें संभाल के रखता था और अगले साल फिर वही लगाता था। अब मोसैंटो नाम की कंपनी आई, उसने कहा, हाँ, अब उन्होंने कहा कि हम आपको बीज देंगे, ये बीज से फसल ज्यादा होगी, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, वो डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, और उसके बहुत सारे गुण दिखाए। बट इस बीज की स्पेशलिटी ये है कि वो बीज से आप फिर से दूसरी क्रॉप उगा नहीं सकते, और ये बीज आपको ये शुरू में फ्री में देंगे, ये मुफ्त में देंगे, 5 साल मुफ्त में देंगे। हमारा जो सीड बैंक है वो खत्म हो जाएगा, आप जिंदगी भर उनके गुलाम हो जाएंगे। दिस इज द ओनली स्टोरी बिहाइंड इट। एंड सेकेंड थिंग इज अ स्मॉल एडिशन टू व्हाट सर आस्क्ड, वेरी ब्लंट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आप क्या चाहते हैं? हमारी डेवलपमेंट की संकल्पना ही गलत है। धरती का इतिहास 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। हमें धरती पर आके कुछ हजार साल हुए, और क्या कर दिया हमने धरती का? एक शेर पे कहना चाहूंगा मैं इस बात का आंसर, हम डेवलपमेंट से खुद को बुलावा दे रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ। ये भी अपने आप में गलत संकल्पना है। आई पर्सनली डोंट एग्री विद इट। एक शेर कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में, उम्र भर वाले यही भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पे और आईना साफ करता रहा। I would request Professor Jojo, on that note, what does this indigenous knowledge can do, and revival of indigenous knowledge, what Professor Bhargoban was talking about, and he explained the whole crisis of. Please forgive me. Please forgive me. I will take 30 seconds. Yes, sure. Just because with this 5 years of mortality we purchased, the 5 years of bloody mortality we purchased, are we stuck with it? Are we stuck with it? Don't we have intelligence? Please answer me that question. I think, may I just say a couple of words about this? Sir, I think it's a matter of political economy. How does this entire global business about the seed, business is running with the solution of the government's policies? Because somewhere we are actually in a way promoting such GM crops in extinction of existing traditional crops. That's what exactly what Professor Jojo was talking about. Different millets people are growing, and the millets are going away. You're bringing in new white, rice into your fields, whereas you've been using brown rice. In many of the rural communities in
Kerala, we still use the brown rice, and many places that's getting disappeared. And these are being sold in, what you call the organic shops. And we purchase it at, maybe 50 times more the price which the villagers used to be providing. Now we are getting into that trap of the so-called modernization, in which the entire policy and the government policies are actually contributing to this. So we have no answers to this. The answer is that our democracy should consider this as our elected representatives must consider this. I think the issue which Professor Jojo was talking about, traditional knowledge. How do we strengthen this traditional knowledge? That will only probably give some insights as to how we can counter. It's not possible one day to wipe out, probably the GM, business from the country. And even the plastic, the Coca-Cola and the Pepsi and all those things, all our youngsters are using it. We just go and buy a Coca-Cola and drink it. What are we doing? Even we must know that when Coca-Cola came to India, the agreement was that the bottles, the PET bottles were also imported in the form of a test tube. It is blown into a PET bottle and it is being discarded. This used to come from US, your country. It used to come from US as part of the entire package. And what is the package? The cap of that PET bottle was made in India. That is a recyclable. The other thing which came from the country of origin is being dumped into the country. So this is a whole policy issue which we are talking about. We don't have answers in this hall. We cannot get answers. But we can sensitize people about this and strengthen traditional knowledge systems and the activism which we are talking about. Collective action is the only possible way, I feel. Sorry to take my chair's position to get into a little more than what is expected of me. Professor Jojo. Scrap the WTO. Yeah, just I'll take probably 2-3 minutes. I just mentioned in my presentation that in Chhattisgarh or from Madhya Pradesh, immediately around the post-independent, there were about 19,000 rice species. Today, just to find out, you'll find all these genetic modified seeds. Now with this, we are dependent on the bloody Monsanto, or what he said, if I can repeat the word. And unfortunately, you see that they are very prone to pesticide and also very fertilizer sensitive and water intensive. Now, if we look at the kind of water intensive crops, sugarcane, the high water intensive crops. Next to that, I think cotton and paddy and this is the crop. The least minimum water intensive crops are millets and pulses. Yeah. Okay, so how many of us or how much state is promoting millets and pulses and that they are more nutritious? Yeah. Okay, so you can see that with that we can take care of the food security. At the same time, we can also preserve some of all the seeds which have been there, tuning to the environment, to the soil and the climatic condition, instead of going after this genetically modified, which has to be certain amount of water, certain number of pesticides, certain amount of fertilizer, and we have to be dependent on exactly. But nobody is answering that because genetically modified this thing, you need water. We are not talking about it. You need water. And your previous chief minister came from Vidarbha. I am passionate and I am not holier than thou. I belong to that country. But I die every single time when I see 1,000 people committed suicide in Umravati. That is where my birthplace is. Absolutely. Absolutely. I think it's really atrocious, but at the same time, this is I think there is a sense among all of us that there is a serious thinking needs to go into this. Each one of us have our roles. What are the contributions which each one of us can make? What did you do? Look at, get the water there. Absolutely. We need to talk about it. Like my friend over there from where is the gentleman there? He wrote 1,000 letters. He wrote 1,000 letters. Why can't we do such things? Absolutely. So we need to do something. Absolutely. We need to have some kind of an action. I'm just tempted to say this as well. If you look at our entire development trajectory,
one single thing have changed the entire agriculture sector in India was minor irrigation. In the entire planning process, we have not given any importance to minor irrigation. We have gone for big dams, we have gone for industrialization, we have gone for green revolution, but we did not give enough importance to minor irrigation. So water issue which we are talking about, had the minor irrigation would have been dealt with in our entire planning process, things would have been changed. In the interest of time, I'm really sorry to stop this discussion. Very interesting discussions. And there is so much of passion generated out of this. This must lead to some concrete actions from individual level as well. And so, and collective action, as Sir was talking about, as Sanjay has been initiated some of this process. Thank you very much to all the panelists. Dr. Arif, we will show the video. We can see the video. Please play the video. And thank you, Dr. Arif. Professor Vipin Jojo and Professor Keshav Walke for this excellent session, and thank you for all of your contribution to this session. Thank you very much. You okay? You need a minute? Cool. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you kind of think this is the obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things we could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. So thank you very much. Now we are at the end of this plenary session number 2, and really we had very interesting session, interesting presentations, and we had very good discussion and thought-provoking questions from the participants. So thank you very much all the participants and presentations. So last part is remaining. I request Dr. Sanjay Bhatt to come on the dais. I request Professor Sanjay Bhatt to come on the dais. So it was really wonderful presentation, and I request Dr. Sanjay Bhatt and Dr. Suresh Patare to felicitate today's speaker and the chairperson. So I request Professor Sanjay Bhatt to felicitate today's chairperson, Professor Shahjahan. Thank you very much, sir. It was really wonderful being chairperson. I request Dr. Patare sir to felicitate Professor Vipin Jojo. Thank you very much. Now I request once again Professor Sanjay Bhatt to felicitate Dr. Keshav Walke.
I request Dr. Katare sir to felicitate Dr. Yamare. So once again, thank you very much, and I call upon Sanjay Roy to propose vote after this. थैंक यू डॉक्टर सुरेश। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया सेशन प्लेनरी सेशन कभी हो सकता है। थैंक यू प्रोफेसर विपिन जोजो, थैंक यू प्रोफेसर आरिफ and प्रोफेसर Walke giving their best effort to discuss the issue we had, social intervention with Dalits and rural community affected by climate change and issues related to environmental sustainability. I don't know whether we have got the answer or not, but still we have to need to think. From this video, what I got to know, just think, when the last tree is cut and the last fish and birds are killed, the last river are poisoned, then you will see that you can't eat money or see real development. We are talking about development. What development should be here or the environment. I think there must have a symbiotic relationship. Everything must go. But yes, there are a lot of issues are there. Government are taking many action, policies are there, and also there are a lot of legal cases are there. If you go through website MC Mehta versus Government of India, a lot of cases are there on environmental sustainability. So we have to think, where should I go? So thank you all of you. And lastly, even many movies are also there to show us, to open our mind, open our see. Like Pushpa, shown how environment is destroyed. So as a citizen, I don't think social worker will think, because a lot of things has to be done by government and other stakeholders, not only social worker. We can think what our responsibility may be, more awareness, more advocacy maybe. So finally, what my mind comes, what is happening, they said it's all about development. The behind is the money and the business. So from that perspective, what I feel, keep in our mind, if we destroy the environment, we won't have society. So thank you all of you, and you are requested to come tomorrow at 9 here. Yeah, thank you, and thank you for patiently listening us from the morning. More than 120 participants are here. Thank you so much. Last announcement, 2-3 announcements. Immediately after this plenary, we have cultural program, Maharashtra Darshan. So we have, our students have prepared some program for you. So please be here. Maybe take a break for 10 minutes and immediately they will set the stage for the program. Tomorrow, those who are interested, there is a Heritage Walk. Heritage Walk is Ahmednagar Fort here nearby, morning 7 o'clock. So we have a lot of tree there, lot of birds there, and also we have Mr. Bhushan Deshmukh, who will tell us about the history of the fort and the history of Ahmednagar. So that is arranged for all the outstation participants and also those who are interested, the local participants. So that is morning 7 o'clock at the Ahmednagar Fort, which is just walking distance from here. So if you come here at 7 o'clock, those who are interested, you can be picked up from your hotel also. होटल से लेके आएंगे आपको अगर आप इंटरेस्टेड है तो, और यस गाड़ी तीनों होटल में होगी और यहाँ से भी गाड़ी होगी. तो सुबह 7 बजे है, 7 बजे यहाँ से जाना है, 7:05 में शुरू हो जाएगा. There is strict time schedule required. At 9 you are calling people to be here for the business. Yes. The president says that strict timing should be followed. 7 मतलब 7 क्योंकि 9 बजे, कल सुबह 9 बजे we have Rajendra Singh. He will be, and
Professor Shahjahan is giving the memorial lecture at 9 sharp. So 7 o'clock is the heritage walk for an hour. Immediately after that breakfast, and 9 o'clock we start session. 9 sharp we start memorial lecture, Professor R.R. Singh memorial lecture and Philip Barnabas memorial lecture. These are the two memorial lectures tomorrow morning at 9. So please be on time. And now please be here that we have immediately after this we have program, cultural program. Thank you. Sir, and it is also requested that Professor Bhatt should be waking up early in the morning. For this heritage walk. Yes, definitely. I take responsibility. It is also requested that Professor Bhatt should be waking up We have to disclose the confidential तैयार हो गए यहाँ बैक टू बैक जाएंगे तो स्टार्ट नहीं करेंगे दादी जी ने अपनी किताब में आप सुने रहे and you cannot satisfy the greed of anybody. I hope बिल्कुल सही कहा
अनुसंधान क्या करना चाहिए? हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो टेस्ट चेक हेलो हेलो दूसरा हेलो हेलो और उसका खड़ा होकर नहीं करता नहीं। इस तरह के फॉल्स विज्ञापन दिखाई कल्चर को हनुमान जी सब्जी का एक गेट लगाएंगे तो मूर्ति वाला पहाड़ दिखाएगा। माँ दुर्गा जो है अब जो राक्षस कहता था तो कोको कोला पी गई थी। देसी बात गवर्नमेंट अलाउड फॉर द कंपनी फॉर देसी बात to change the mindset of the people. There's something. So I hope I did not was wrong. 4 लाख एक बार कहूँगा ये पाकिस्तान को जारी करता है आपने बैन कर दिया और हिंदुस्तान को मतलब you want to say the right thing you are not responsible फिर से पकड़ के ला रही है बात बात नहीं करता पहले आपने दिशा करना दी जाए हमारे बच्चे जो है क्या घर में गरीब आदमी के पास गलत आदमी के डाल चोरी sorry, maybe very serious last year, all the fun, all the hello, hello, आराम से पहुँच गए खत्म हो जाती है काम होगा सबसे वहाँ भी बताओ याची गिअर खराब झालेली आहे ते टाईट होईल का अरे नाही नाही पण एल एन बी असेल माझ्याकडे स्क्रूड्रायव्हरचा सेट आहे उद्या मी आता घेऊन येतो त्याच्यामध्ये असतात ते बघा मी आणतो उद्या होईल ते टाईम मग कशा प्रयत्न घेऊन येतो माझ्याकडे स्क्रूड्रायव्हरचा सेट आहे
responsibility with the president. काय होईल का काय काय करायचं आधार कार्डच भेटेल ना आधार कार्ड तुम्ही व्हॉट्सअपला टाकलं म्हणे तो व्हॉट्सअप चेक बरं PDF फाईल आहे तर संध्याकाळी दुसरं डाउनलोड करतो आधार कार्डचं टाकलं OTP आला बोलते हैं कि मैं नौकरी के लिए don't go. I'll concentrate fully. I want to see it. So, the first thing he gets it, then postpone their ticket to the you didn't get the job. The father is a great man. I saw him in the late 1957 after 35 years. And I did with all the interest. Today, I'm just on the बाकी नहीं करेंगे नॉट टॉक प्रिंसिपल था आराम करना चाहिए थोड़ा सा।
Because I used to work for ISWCPlanary Session. I used to sit in that room opposite to director. He came out to 1 year, I think. Last year you also Can afford to lose the food. Yes. Yeah, you can afford to lose it. Not those young fellows. They need jobs. स्टार्ट कर दो भैया शुरू कर दो हाँ प्रसन्न कुमार
Welcome. Suswagatam. Namaskar. Good evening to everyone. I am Miss Manali. I am Mr. Sagar. Today's day is going to be the most memorable life. We CSRD first year, second year MSW students are going to present a cultural program. महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें आपको विविध प्रकार की संस्कृति दिखाई देगी। महाराष्ट्र राज्य कई चीजों के लिए मशहूर है। राज्य फिर चाहे मुंबई के बॉलीवुड से लेके औरंगाबाद के अजंता एलोरा गुफाओं तक, नासिक के गोदावरी नदी से लेके नागपुर की मशहूर संतरी तक, हर एक जिला अपनी अपनी खूबसूरती को लेके महाराष्ट्र को बनाता है। महाराष्ट्र की राजभाषा मतलब मराठी, लेकिन उसमें भी आपको विविध प्रकार मिलेगी, जैसे वराडी, कोकणी, पावरी, आयरिनी इत्यादि। महाराष्ट्र को साधु संतों की भूमि से संबोधित किया जाता है, तो उन संतों को हम भूल नहीं सकते, जैसे संत गाडगे बाबा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ। इन्होंने अपना समाज कार्य के माध्यम से अपना योगदान प्रदान किया है। थोड़ा इतिहास में और आगे बढ़े तो मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कर्तृत्व का इतिहास, राज्य अभिषेक की कहानियाँ, शिवाजी महाराज जी के माँ प्रति प्रेम, महिलाओं के लिए सम्मान, अपनी भूमि प्रति प्रेम, स्वराज्य की स्थापना और ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ऐसे अनेक क्षण आपको महाराष्ट्र की भूमि पे दिखाई देगी। तो चलिए
आपको महाराष्ट्र की संस्कृति का अनुभव कराने मैं मिस्टर राजगिरी को आमंत्रित करती हूँ। थँक यू मनाली. राम राम मंडळी. नमस्कार. कशा आहात? महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें आपको विविध प्रकार की संस्कृति दिखाई देगी. पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहाँ जहाँ जाओगे आपको नई नई संस्कृति देखने मिलेगी. तो चलिए हम आपको महाराष्ट्र संस्कृति के बारे में अनुभव और परिचय कराते हैं. सबसे पहले हम मिलकर रंगमंच को प्रणाम करते हैं और सम्मानित करते हैं. अब हम आपको महाराष्ट्र के ग्रामीण परिसर का अनुभव कराते हैं, जिसमें सूर्योदय के साथ साथ ही वासुदेव का आगमन होते हैं. वासुदेव अपने भक्ति गीतों के माध्यम से जो दर्शन देते हैं वह दिव्य है. वासुदेव की जीवन दृष्टि यह है कि हमें जीवन में मिलने वाले अच्छे और बुरे अनुभव को ईश्वर को सौंप देना चाहिए. अनुभवों को अनुमान है वासुदेव की परंपरा मराठी संस्कृति में 1000 से 1200 साल पुरानी है. संत तुकाराम, संत एकनाथ इनकी पंक्तियों में वासुदेव की परंपरा को उल्लेखित किया हुआ पाया जाता है. तो अब हम वासुदेव की एक झलक देखते हैं. महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा मराठी है. तो मराठी पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है. साल का पहला दिन बड़े ही धूमधाम से और उत्साह से पूरे महाराष्ट्र भर में मनाया जाता है. तो आइए अभी हम गुड़ी पड़वा की एक झलक देखते हैं. कोळी समाज महाराष्ट्र में मुख्यतः
मुंबई शहर के अरबी समंदर के किनारे कोली समाज के लोग वास्तव करते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय मच्छीमारी यह है। तो अब हम कोली समाज के सांस्कृतिक नृत्य का आनंद लेते हैं। महाराष्ट्र के कुछ विशेष जिलों में जैसे चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, धुले, यहाँ ज्यादा आदिवासी समुदाय का वास्तव देखने मिलता है। उनकी अपनी एक विशेष संस्कृति और परंपरा है। उनमें से ही एक आदिवासी गोंडी नृत्य को हम आपके सामने पेश करते हैं। तो स्वागत करते हैं आदिवासी नृत्य का। महाराष्ट्र यह अनेक महान संतों की कर्मभूमि है। प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर इन संतों के जन्म या समाधि स्थलों से अनेक पालकियां व दिंडियां निकलती है, जो लंबा सफर तय कर पंढरपुर, जिसे वारकरियों का मायका कहा जाता है, वहां पहुंचती है। इसे वारी कहा जाता है। लेकरांची सेवा केली सतुआई, लेकरांची सेवा केली सतुआई, कसे पाप फेडू कस हो उत्तराई, तुझ्या उपकारास जगी तोड नाही, ओवरील जीव माझा सावडे विठई विठ्ठला
माय बापा जन्मभरी पूजा तुझ्या उपकारांची, जन्मभरी पूजा तुझ्या उपकारांची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू, पांडुरंग पांडुरंग। यह कुछ पंक्ति के साथ हम सब भी इस वारी का हिस्सा बनकर भगवान विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन करते हैं। अब मैं महाराष्ट्र के आराध्य देवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की स्तुति और उनके गुणगान के ऊपर एक मराठी पोवाड़ा आप सभी के सामने पेश करता हूँ। हे हे मावळा मी वदळा मी, अरे मरणाचा मी काळा मी, रणमस्तांची जात आमची, अरे भ्या कुणाला धावतर, भिंत तलवारीशी नातली मातीशी, वाकर सनवरांची रोज खायाची, रयतेचा राजा आम्ही मातर कायाच, जिकत नाही जवर तवर झुंज करायाच, तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणा कणाला झुंजतोर, हे मेल्या मना जागयावी अशी त्याची भाषा मेल्या मना जागयावी अशी त्याची भाषा, मराठी मातीची तोच आहे आशार, दुश्मनाला धाक देई शिवरायांचं नावर, दुश्मनाला धाक देई शिवरायांचं नावर, हे शंभू शंकराचं नव राजगड घावर, शिवबाराज 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 आजर, गणपती गजपती अश्वापती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती, अष्टप्रधान जागृत अष्टप्रधान वैष्णित, न्यायलंकार मंडित, शास्त्रज्ञ शास्त्र पारंगत, राजनीती पुरंदर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज शिव छत्रपती महाराजांचा विजय, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा। अभी तक हम सभी ने देखा कोड़ी समाज और आदिवासी समाज का सांस्कृतिक नृत्य, तो अब बारी है महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय और महाराष्ट्र का सांस्कृतिक नृत्य जिसकी भारत भर में अपनी एक अलग पहचान है, वह मतलब लावनी। तो अब हम सब मिलकर लावनी नृत्य का आनंद लेते हैं। Mana
दही हंडी किसे नहीं पता। महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार गोपाल काला, यह पूरे महाराष्ट्र भर में दही हंडी के नाम से प्रसिद्ध है। दही हंडी के दिन बच्चों और युवकों की टोली गोविंदा बनकर इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर महाराष्ट्र के इस सुनहरे त्योहार का आनंद लेते हैं। इस प्रकार से हमने आपके सामने महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रदर्शन किया। आशा है आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। Now I hand over the program to Ms. Manali and Mr. Sagar. माइक। शुक्रिया राज, हमें महाराष्ट्र संस्कृति और उसका महत्व बताने के लिए। अन्न देवता जिस पे हम सब निर्भर है वे मतलब किसान। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता है। किसान के बिना अन्न नहीं, अन्न के बिना जीवन नहीं। किसान भगवान का रूप होता है जो कि दिन रात जी तोड़ मेहनत करके देशवासियों का पेट भरता है। अपने देश को आगे बढ़ते देखना है तो हमें किसान का सम्मान करना होगा। उनका ही सम्मान करते हुए अभी आपके सामने पेश करेंगे किसान गीत। आम्ही जातीचे शेतकरी खातो कष्टाची भाकर। कष्टाची भाकरी
कशी वाटली आमची कष्टाची भाकरी? अशीच आमची महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, जी कष्ट करून आणि घाम गाळून खाल्ली जाते. When we talk about our theme, green social work, green means nature and nature means a life for everyone. But what if we take off our own life without thinking about the environment around? Let's see what will happen by showing you all a mine with the theme Jan Jangal Zameen.
reality we face today is that only about 3% is full of water, and out of which
only 0.5% is usable. The remaining 2.5% is either blocked in glaciers, or in atmosphere, or soil, or is highly polluted. Due to the large-scale deforestation, there is a decline in the biodiversity, further leading to the disturbances in the ecosystem, also affecting the rain pattern and leading to various other problems. Thus, understanding the gravity of this problem, let us all stand against this injustice and oppression happening to Mother Earth in unity for a better tomorrow for you and for me. Thank you. पर्यावरण को बचाना हमारा ध्येय हो, सबके पास उसके लिए समय हो। पर्यावरण अगर नहीं रहेगा सुरक्षित, हो जाएगा सब कुछ दूषित। Do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself. And flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help each other. No matter how difficult it is, life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. With this, let's take a pledge to protect our nature and give our efforts to save Mother Earth, and as a human being, to spread a word of save the environment and protect it at all costs. I thank you, Mrs. Patare, for being with us throughout our preparation for this culture program. I also thank all the guests for being part of this program, attending the culture program, and also our students for contributing in this culture program. Thank you, everyone. Now, I request food committee to lead the guests to the lawn for dinner. Thank you. Thank you. पूरे महाराष्ट्र कल्चर दिखा दिया और उसके बाद पूरे कॉन्फ्रेंस की थीम को यहाँ पे इन्होंने विजुलाइज करा दिया ना। तुमची वाट हजारे सर बोलते म्हणे शेड्यूलमध्ये नाव नाही म्हणून कसं छान झालं पण मॅडम क्रेडिट गोष्ट मॅडम तो क्रेडिट देना चाहिए सर हाँ वेरी फंडास्टिक अभी अच्छे He's carrying himself also and he's carrying 20 kg luggage also.
किताबों का लगे शादी के लिए किताब लेके आए अमेरिका से। अमेरिका से लेकर आए, पता नहीं 25 किलो है, 30 किलो है, कितना किलो है। मेरी Only dance they got first place in the international. So they did this whole art and culture.